नमस्कार, सुस्वागतम, सुप्रभात. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिररंगैस्तुष्टुवासस्तनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः. आइए अपने कानों से आज कल्याणमय वचन सुने, अपनी आंखों से मंगलमय घटित होते देखें. उपस्थित सभी स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहे और सभी जनहितार्थ लंबी आयु प्राप्त करें. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, respected dignitaries, esteemed guests and dear friends. On behalf of Hindu Research Foundation, I, Dr. Anita Santosh Tilve from Goa, welcome you all in today's Saptarushi Puraskar Shrunkhala 2023 program. Maitri Parivar Sanstha and Vishwa Mangalya Sabha also joins with HRF in welcoming you. I am absolutely delighted and honored to be a master of ceremony for today's felicitation program. With the hopes high and spirit soaring, let us begin this function with an atmosphere of learning, warmth and camaraderie. I welcome you all to the beautiful Orange City, Nagpur, and equally beautiful and elegant place, this Kalidas Auditorium. I now request founder and managing trustee of Hindu Research Foundation and brain behind this magnificent function, Dr. T.S. Bhal, retired Additional Director General of Police, and Vishwa Mangalya Sabha's Nagpur President, Mrs. Ruchika Jain, to kindly bring all the distinguished personalities on the dais. And while coming to the dais, I request them to light the lamp and pay the tribute to Swami Vivekananda's Pratima by offering flowers. Swami Jitendranath Maharaj, Sri Hansaraj Ahir, Professor Penna, Dr. Sridharan, Dr. Kasturi Rangan, Dr. Anil Kakodkar, Dr. Vijay Bhatkar, Dr. Ganpati Yadav, Shri Sudhakar Gaidhani, and Dr. Anmol Sonawne. Kindly come to the stage and occupy the seats. Along with them, I request Mr. Suresh Kote and Mr. Bhagwan Raut kindly come on the stage. जोरदार तालियों से सभी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज का हम मंच पर स्वागत करते हैं. कृपया आप विराजमान होइए. धन्यवाद. मैत्री परिवार संस्था और विश्व मंगल सभा इनके सहकार्य से
हिंदू रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आज ये शानदार कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। The purpose of this August gathering is to acknowledge and honor the real heroes for their outstanding performances and revisiting glorious past of भारतवर्ष। तो आइए विश्व शांति की प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। I request Dr. Bhal to kindly come forward and recite the prayer, and I request all of you to repeat after him. देवी और सज्जनों, भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर स्तवन से की जाती है, हमारी परंपरा है। हम उस परंपरा को निभाते हुए विश्व शांति की प्रार्थना यहाँ पर सभी लोग गाएंगे। मैं पहले गाऊंगा, वही वाक्य या स्टैंजा आप उसको दोहराइएगा। ओम भूर्भुवस्वः देव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम द्यौ शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम भूमि मंगलम उदक मंगलम अग्निमंगलम वायुमंगलम गगनमंगलम सूर्यमंगलम चंद्रमंगलम जगतमंगलम जीवमंगलम देहमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवाद।
Dhanyavad Bhal sir. We are fortunate to have distinguished guests for this wonderful event. I would like to acknowledge the dignitaries who joined us today, and I request office bearers and members of Hindu Research Foundation to kindly come forward and welcome the guests. आइए शुरुआत करते हैं स्वामी जितेंद्र नाथ महाराज जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं. I request Dr. T.S. Bhal, Ravi More and Deep Patil to come forward and give him a warm welcome. स्टोल, पुष्पगुच्छ और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देकर हम सब अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं. इसके बाद आज मंच पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी. मैं विनती करती हूं श्री सुरेश कोते, स्नेहा देवतड़े एंड ऋषिकेश असोले इनको कि वो सामने आए और मधुसूदन पेन्ना जी का स्वागत करें. धन्यवाद. आज के चीफ गेस्ट श्री हंसराज अहिर थोड़ी ही दिन के बाद यहाँ उपस्थित हो बाद में करते हैं. एंड नाउ वी वेलकम आवर स्पेशल इन्वाइटीज अवॉर्डीज ऑफ सप्तऋषि पुरस्कार. पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीधरन, श्री प्रमोद चौगुले, अभिषेक चाचा एंड अलोक चांडक. आई रिक्वेस्ट यू टू वेलकम पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीधरन. धन्यवाद. इसके बाद हम स्वागत करेंगे पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का. श्री बिपिन पटेल, शुभम कामड़ी और दिवेश अग्रवाल ये इनका स्वागत करेंगे. Thank you. Now we welcome Padma Vibhushan Dr. Anil Kakodkar. Shri Hemant Gore, Harsh Deshmukh and Manthan Charude will welcome him. धन्यवाद. इसके बाद हम स्वागत करते हैं पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर जी का. डॉक्टर तुषार देसाई, अलोक गुप्ता एंड मयूरेश गंडेवार come forward and give warm welcome to Dr. Vijay Bhatkar.
मैं विनती करती हूँ श्री द्वारकाधीश प्रतिष्ठान नागपुर से भागवत प्रवचनकार सौ अंजलि ताई जी को कि वो यहाँ मंच पर आए और डॉक्टर विजय भटकर का उनके प्रतिष्ठान की तरफ से स्वागत करें। इसके बाद हम पद्मश्री डॉक्टर जीडी यादव जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर रंजन कोठारी, अभिषेक मोहगांवकर और निशांत देवतळे, इनको मैं विनती करती हूं कि वो आगे आए और डॉक्टर जीडी यादव जी का स्वागत करें। धन्यवाद। महाकवि श्री सुधाकर गायधनी जी का स्वागत करेंगे श्री अशोक शिंदे, शिवाजी राजे जाधव और प्रणय सराफ। धन्यवाद। यानंतर डॉक्टर अनमोल सोनवणे यांचं स्वागत करण्यात येईल। मी विनंती करते श्री देवेंद्र मते, शिवानी राठी आणि विजयेंद्र सिंह राजे भोसले की त्यांनी पुढे येऊन डॉक्टर अनिल सानवणे यांचं स्वागत करावं। आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय श्री हंसराज अहिर मंचावर आलेले आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करूया। धन्यवाद। मी विनंती करते भगवान राऊत, रुचिका जैन आणि प्रमोद पेंडके यांना की त्यांनी हंसराज अहिर यांचं स्वागत करावं। धन्यवाद। आज ह्या कार्यक्रमाला सिंदखेड येथील राजमाता जिजाबाईंच्या घराण्यातील वंशज श्री शिवाजीराजे जाधव उपस्थित आहेत। आपण त्यांचंही व्यासपीठावर स्वागत करणार आहोत। मी विनंती करते श्री आनंद फिसके, प्रीती रामकृष्ण आणि सुनील गोदानी यांना की त्यांनी पुढे येऊन श्री शिवाजीराजे जाधव यांचं स्वागत करावं आणि श्री शिवाजीराजे जाधव यांनाही विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्वागत स्वीकारावं। धन्यवाद। त्याचप्रमाणे तंजावर येथील शहाजी राजांच्या घराण्यातील वंशज
श्री विजेंद्रसिंहराजे भोसले हेही आजच्या या विशेष कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत करूया. मी विनंती करते श्वेताली ठाकरे, निलेश ढोबळे आणि प्रथमेश खोत यांना की त्यांनी श्री विजेंद्रसिंहराजे भोसले यांचं मंचावर स्वागत करावं. धन्यवाद. Now we will welcome Sri Raman Tripathi, who is IT engineer and who has reconstructed 700 temples. I request Sri Raman Tripathi to kindly come on stage, and I request Dr. Bhal and Pramod Nandgaonkar to kindly welcome him. धन्यवाद. यानंतर ज्यांच्या कालिदास ऑडिटोरियममध्ये आपण बसलेले आहोत त्या पर्सिस्टंट कंपनीचे समीर बेंद्रे COO इथे उपस्थित आहेत. मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं आणि डॉक्टर भाल आणि डॉक्टर तुषार देसाई यांनी त्यांचं स्वागत करावं. बरं, ते आल्यानंतर त्यांचं स्वागत करूया. श्री वैभव काळे, Bank of Maharashtra Zonal Manager, kindly come forward, and I request Dr. Bhal and Suresh Kote to welcome him. And Bhagwan Raut join with him. Thank you. It says that dreams come true when you have the courage to pursue them. And here is the courageous man, none other than Dr. Bhal, who has turned the dreams into reality. Last year, in the same month, that is on 9th October, in the same picturesque auditorium, Hindu Research Foundation had felicitated Dr. Raghunath Mashelkar and Dr. Nambi Narayanan with Nag. आज के उत्सव मूर्ति, सत्कार मूर्ति एंड अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा विनम्र अभिवादन, प्रणाम और राम राम. उपनिषदों में एक श्लोक आता है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि जो संकुचित प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग ये मेरा और उसका इस तरह का डिफरेंस करते हैं, लेकिन जिनका चरित्र उदार होता है उनके लिए वो और मैं ये अलग नहीं होता, पूरा विश्व ही उनका परिवार होता है. ये हमारी मान्यता है. ये हिंदू रिसर्च फाउंडेशन सन 2000 में हम लोगों ने स्थापित किया है. इसका उद्देश्य यह है
कि भारतीय परंपरा या हमारे संस्कृति में जो विशेषताएं है, विज्ञान कला और क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां है, वो काल के गणना में लुप्त हो गई है। वो हम विश्व के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर जो हमारे ऋषि मुनियों ने कला विज्ञान के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, वो समाज के सामने, विश्व के सामने उजागर करने का एक छोटा सा ये प्रयास है। पिछले साल हम लोगों ने, इस संस्था ने, हिंदू रिसर्च फाउंडेशन ने रघुनाथ जी माशेलकर, इनको नागार्जुन अवार्ड से विभूषित किया था, और श्री नम्बी नारायण जी, जो विकास लिक्विड ऑयल के ये थे, उद्गाते थे, उनको हम लोगों ने भारद्वाज अवार्ड से सम्मानित किया था। उस प्रतिसाद को देखकर हम लोगों ने इस वक्त सप्तर्षि पुरस्कार श्रृंखला ये हम लोगों ने निश्चित की थी। पुराणों में सप्तर्षि के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, और वो शब्द भी बड़ा कॉमन है। जब रात के वक्त हम आकाश में देखते हैं तो वहाँ पे सप्त ऋषि करके हम लोगों ने तारे देखते हैं, उनके नाम भी उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। और वो सप्तर्षि जिन्होंने समाज के लिए अपने परिश्रम से, तपश्चर्या से, कला विज्ञान के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, वो दर्शाता है। और वो ऋषि है अगस्त्य। दो मत है, एक जैमिनीय मत, शायद पेना जी इसके बारे में और गुरुदेव इसके बारे में ज़्यादा बात कह सकेंगे मेरे से। जैमिनीय ब्राह्मण के मुताबिक अगस्त्य ऋषि, अत्रेय ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र ये कहा है। लेकिन बृहदारण्यक अरण्यक के माध्यम से अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जगदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये 7 ऋषि का नाम आया है। ये हमारे पुराणों में 7 ऋषि जिनके विविध क्षेत्र के काफी योगदान है, उसके बारे में है। आधुनिक युग के जो सप्तर्षि आपके सामने बैठे हैं, जिनका आज हजारों साल के बाद हम वो सप्तर्षि को याद करते, इसके आगे 1000 साल के बाद ये सप्तर्षि, तीसरा जनरेशन जो वर्षन आएगा, वो तीसरा वर्षन यहाँ पर निर्मित होगा। तो मैं इनका सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारी जो रिक्वेस्ट थी, विनती थी, उनको इन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस देकर यहाँ पर आने की मेहरबानी की, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय संस्कृति के बारे में अनेकों की अपनी अपनी रंजिश है। कोई द्वेषमूलक है, कोई उसे छद्म विज्ञान करके उसको पुकारा जाता है, कहा जाता है, और खामियां ढूंढ ढूंढ कर लाकर वो कितनी बुरी थी हमारी संस्कृति या हमारा धर्म था, ये समाज के सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स है, ये शब्द में इसके लिए छद्म पुरोगामी जो लोग हैं, वो हमारे संस्कृति में खामियां ढूंढकर हमारे कलुषित करने की कोशिश और एक प्रयास सभी दूर पाया जाता है। वो अपना मत है, लेकिन उनके कहने से या उनके न कहने से संस्कृति बुरी या भरी नहीं हो सकती, ये हम लोग मानते हैं। और उसी वजह से जो भी हमारे संस्कृति में उपलब्धियां है, वो समाज के सामने, विश्व के सामने रखने की एक छोटी सी एक कोशिश इस माध्यम से हम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि हिंदू संस्कृति का कोई त्राता नहीं है, ऐसे लगता है। जो भी संस्कृतियां या धर्म, वही बड़ा है जिसको राज्याश्रय है। हमारे 1100 साल तो परतंत्र और गुलामी निकल गए। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट आया तो उसको सेकुलर कहे, सभी धर्मों को समान ये होना चाहिए, संधि होना चाहिए करके कहा है। लेकिन उसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म को कलुषित करना और उसको दुर्लक्षित करना, ये उसका मायना निकाला गया है। तो सेकुलर के बजाय, निधर्मी राज्य बजाय अधर्मी राज्य हो गया, ऐसे आज सभी को एक एक्सपीरियंस आ रहा है, अनुभव आ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जबकि इस देश में 80% हिंदू है, फिर भी हिंदुओं के तरफ देखने का जो पुरोगामी जो तत्व है, उनका एक रवैया है, दृष्टिकोण है, वो बहुत ही घिनौना है।
80% लोगों को दुर्लक्षित करके भला हम कैसे शांति से जी सकते हैं। और हिंदू परंपरा या हिंदू संस्कृति या पुरातन या सनातन संस्कृति, जिसको विविध नाम से हम जानते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। अन्य धर्मों में उसी धर्म के, उसी संप्रदाय के अनुयायी हो, उसी का चिंतन और उसी का कल्याण चाहते हैं। हम तो जड़ चेतन, कीड़े मकोड़े, जिसमें भी प्राण है और प्राण नहीं है, उनकी हम बात करते हैं। तो भला ये हमारी संस्कृति किसी के बारे में द्वेष क्यों करना सिखाएगी? लेकिन ये चीज हम विश्व के सामने उजागर करने की जरूरत है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो आज की व्यवस्थाएं है वो सेल्फ प्रमोशन में ज्यादा है, धर्म प्रमोशन या संस्कृति प्रमोशन में नहीं है। वो उच्च कोटि का ज्ञान है। जब भी कोई भी हिंदू धर्म में या संस्कृति में बखान करते हैं या बयान करते हैं या प्रस्ताव करते हैं, तो वो पीएचडी लेवल की बात करें, मोक्ष, मुक्ति वगैरह वगैरह, जो सामान्य आदमी के समझने के परे है। वो अगर शुरू से कोई एबीसीडी अल्फाबेट्स अगर बताए तो वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अन्य धर्मों में और संप्रदायों में जिनके ग्रंथों में जो जो चीज लिखी गई है वो उसके हर एक अनुयायी को पता हो, इसकी कोशिश की जाती है। ये हमारे धर्म में सबसे बड़ी कमी है, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी कमी है। ये हमारा दुर्भाग्य कहे। और उसके वजह से भारतीय संस्कृति आज ये हाल है, एक अपंग, अनाथ, असहाय और ऐसे चीज या अनुभव हमें महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो एक कोशिश है कि हमारे पुराण काल में, उसको हम लोग बीसी और सी कहते हैं, कि क्रिस्त पूर्व और क्रिस्त के बाद जो ऋषि मुनियों ने विविध क्षेत्र में जो साइंस में, कला और आर्किटेक्ट्स, इसमें जो योगदान किया है, उनके नाम से हम लोगों ने ये 7 अवार्ड्स इस वक्त इस साल शुरू किए। पिछले 2 साल थे। समाज का प्रतिसाद जिस तरह से आएगा और उस तरह से इसके और लोग निश्चित है 16 अवार्ड जिन्होंने विविध, उसकी यादी आपके ब्रोशर में दी है, कौन ऋषि मुनि है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है उस दरमियान। हमारे समाज में और विशेषकर हिंदू समाज में और लोग हमारे बारे में कुछ ज्यादा करते नहीं, हमारे में से ही लोग उसको कलुषित करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा दुर्भाग्य है। हमारे ही विद्वान जो एक बार पढ़े लिखे हो जाए तो हमारी कमियां निकालकर विश्व के सामने रखती। जरूर है उसके, वो एक हमारे पास मराठी में कहा, निंदकाचे घर असावे शेजारी, उस बहाने तो पढ़ लेते हैं। कुछ धर्म तो ऐसे है कि मैं वो नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मतलब कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, राम को ईश्वर नहीं मानूंगा, विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा। अरे नहीं मानना बात, क्या नहीं करूंगा, मतलब क्या करना चाहिए बता के धर्म स्वीकार करना चाहिए। तो क्या नहीं करूंगा ये करके धर्म स्वीकार, मतलब धर्मांतर करते। और दुर्भाग्य की एक बात है कि सत्ता के लालसा में हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ वो धर्मांतर के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर अपने ही धर्म की गाली सुनते हैं और वहां तालियां बजाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसे चीजों को तो कम से कम उन्होंने नहीं जाना चाहिए। धर्मांतर करे, करने में दिक्कत नहीं है, जिसको जो रुचि, हमें स्वतंत्रता है किसी भी। और हिंदू धर्म में तो हर चीज को शास्त्र के रूप में हर बात स्वीकारी जाती है। सर काटकर किसी को धर्म कन्विंस नहीं किया जा सकता। हमारे पास तो अगर कहीं 4 बात आ जाए कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, 8 बात तो ठीक है, शास्त्रार्थ कर ले और तेरी बात अगर सिद्ध हो जाए तो हम मान लेंगे। तो ये हमारा परंपरा है। हम शस्त्र नहीं उठाते धर्म को कन्विंस करने के लिए। विवेकानंद जी ने जब विश्व के सामने कहा कि मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने सभी विश्व के प्रताड़ित समुदाय को अपने आश्रय में लिया और बिना कंडीशन के, कहीं ये कंडीशन डाली कि मेरा धर्म स्वीकार करिए तो हमारे पास रहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो विशाल संस्कृति है, अथांग है, जो जितना उसमें डुबकी मारे और जितना वो खोज करे उतनी चीजें अपने को सामने आएगी। ये अथांग सागर है, आकाश के जैसा विशाल है हिंदू धर्म या हमारी संस्कृति। हमारे पास साइंस, अभी मैं साइंस की बात जब कर रहा हूँ और हिंदू रिसर्च फाउंडेशन साइंस की बात कर रहा है, अनेक उदाहरण जो हमारे महाभारत में, रामायण में, जो साइंस के परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जा सकता है। कल हमने एक भोज रखा था, प्रतिभोज, उसमें इसका उल्लेख किया था। शायद कल जहां लोग होंगे उसके बारे में क्षमा करें, वो शायद रिपीटेशन हो। लक्ष्मण रेखा करके हम लोगों ने
सुना था कि सीता मैया जब वो भगवान राम सुवर्ण मुर्ग के पीछे गए तो वहां से आवाज आई कि लक्ष्मण लक्ष्मण जोर से। तो मैया ने कहा कि जाके देखो आपके बड़े भैया संकट में, तो उसको ये आपको कहानी मालूम बताने की जरूरत नहीं। उन्हें जाने के वक्त एक लक्ष्मण रेखा उनको एक करी, रेखांकित की और मैया को बताया कि तुम रेखा पार मतलब कोई भी कुछ हो जाए, श्वापद आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई भी हो, इसको क्रॉस मत करना, उल्लंघन मत करना इसका। और वो निकल के बाद में तो आपको स्टोरी मालूम है, ये सिलेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें ऐसा है कि कोई आता है तो ही उसको मतलब ज्वाला उसको हड़प लेगी, लेकिन सीता मैया अगर क्रॉस करती तो उसको कुछ नहीं होगा। तो ये क्या चीज होती है, इसमें साइंस में परिभाषित किया जा सकता है क्या ये हो, वेदर इट इज सिलेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग एल्स, एंड दैट टू विद द बो, एक बाण से वो करके ये करते। ये अनुभव अभी हमको आ रहा है, गांव के रहने वाले हम लोग काश्तकार है। अभी सोलर ऑपरेटेड वो एक तार आता है और खेत के सब चारों तरफ लगा दिया जाता है। सोलर बैटरी से अगर वो ऑन कर दो तो कोई भी हिरन हो या कोई स्वापद हो खेत में नहीं आता। अब ये इतने सालों के बाद हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये कैसे डिसबिलीव कर सकते कि उस वक्त लक्ष्मण ने इस तरह की रेखा नहीं खींची होगी। कुछ न कुछ होगा, लेकिन उसके तरफ देखने का ही हम देखते हैं पुराणों के और आध्यात्मिक रूप से, कथा के रूप में। उसमें साइंस कोई नहीं देखता। एक कल और एक उदाहरण मैंने बताया था कि जब महाभारत में एक प्रसंग आता है, सिंधु नरेश जयद्रथ का वध, आपको मालूम है कि जब उसने कसम खाई थी अर्जुन ने कि कल शाम तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं किया या शिरच्छेद नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। वो कहानी होगी। जिस दिन वो वध करना, दूसरे दिन जब जयद्रथ को अर्जुन से काफी दूर रखा गया और अचानक दिन मध्याह्न में होते हुए सूरज डूब जाता है और सब लोग जल्लोष करते हुए कि अभी अर्जुन आत्मदाह करने वाला, चलो सेलिब्रेट करते हैं, आज की भाषा में बोलने के रहा तो, और सब आगे आ जाते हैं। और अचानक फिर वो सूर्य बाजू में हो जाता है और कृष्ण भगवान कहते ये जयद्रथ सूर्य है, इसको ठिकाने पे लगा दे, ऐसी भाषा में कहा होगा आज की भाषा में। ये कहते हैं तो और एक कॉशन दिया जाता है कि अर्जुन एक ध्यान रखना, इसका शिरच्छेद करेगा ना तो वो जमीन पर गिरने न पाए। वो अगर गिर जाए तो तेरा मस्तिष्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये सिर जो गिरेगा वो उसके पिताजी के लैप में गिरना चाहिए। सर आपका स्वागत है। yes. yes. हाँ, तो ये एडवांस इंटेलिजेंस कृष्ण को होना कि इस तरह का अगर प्रसंग आ गया तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और दूसरा है कि एक बाण के द्वारा या तीर के द्वारा वो सर काट पर इस जगह पहुंचाया जाए कि तो उसी के पिताजी कहीं वो तपस्या कर रहे होते, वहां जाके वो उसके पांव में गिरा जाए और वो अपने बाण के द्वारा वहां भेजना है। अब ऐसा कौन सा बाण होगा कि पिताजी कहां बैठे हैं मालूम नहीं, वहां पर वो जाके गिरना चाहिए, नहीं तो ये मर जाता था अर्जुन, नहीं तो भी दोस्त आत्मदाह करना था। अगर आत्मदाह नहीं किया और वो सर उनके पिताजी के पांव पे नहीं गिरा तो वो वैसे ही मरना था। तो कृष्ण के द्वारा वो जो गाइड किया उनको या मार्गदर्शन किया, तो अर्जुन के बाण से जयद्रथ का सिर वो अपने बाण के नोक पर से जाकर उनके पिताजी के लैप में या पांव में गिरता है और वो पिताजी का मस्तिष्क उड़ जाता है। इसमें हम लोगों ने एक प्रसंग कल मैंने बताया था कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ड्रोन से उड़ाया गया था। ड्रोन से कहां से उन्होंने मारा है ये मालूम नहीं, लेकिन इस तरह से प्रिसाइजली वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का वध किया गया, मतलब उसका मर्डर किया गया आज की भाषा में। उस वक्त वध शब्द यूज करते होंगे। अगर संभव है आज, तो उस वक्त हम कैसे नकार सकते हैं कि गाइडेड मिसाइल के द्वारा या गाइडेड बाण के द्वारा ये इस तरह का सर काटकर उसके पिताजी के जो जगह मालूम नहीं वहां जाके वो उनको गिराना, ये साइंस है। अगर ये साइंस का कोई ना कोई स्टडी होना चाहिए। अब उसमें कितनी मनगढ़ंत कहानी है या कॉक एंड बुल स्टोरी है,
हुआ या नहीं है, ये भी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हुआ ही नहीं है, लेकिन ये कल्पना मात्र है। तो व्यास जी की कल्पना की शक्ति तो भी हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस जमाने में जिसका कालखंड अभी तक निश्चित नहीं हुआ, महाभारत कब हुआ अभी तक सभी अंदाज ये है, कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 10,000 ऐसे बोलते हैं, वो है कब हुआ किसी को मालूम नहीं, लेकिन जब भी हुआ है तो उस वक्त इस तरह की विद्वत संस्कृति उपस्थित थी, ये जरूर मानना जरूरी है। उसकी विद्वत्ता, जो लिखने वाली की जो ऑथर है उनकी विद्वत्ता तो मान्य करे, लेकिन हमारा जो समाज है हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते कि कहानी है, कुछ तो भी कल्पना की है, लेकिन कल्पना के लिए विद्वत समाज की जरूरी है। उस वक्त का जो दर्शाता है, समाज दर्शाता है, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति दर्शाता है, उस वक्त का एजुकेशनल लेवल दर्शाता है। महाभारत के काव्य अगर कोई पढ़े तो आज पढ़ना ही मुश्किल है, क्योंकि इतना क्लिष्ट वो लिखा गया है, क्योंकि उस वक्त के वो प्रतिभाशाली संस्कृति का एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम मानते हैं। तो जो भी हमारे शास्त्रों में, फिर महाभारत में हो, रामायण में हो, जहाँ भी जो साइंस या विज्ञान की जो बात है उसको हम विश्व के सामने उजागर करें। राम सेतु की बात, आर्किटेक्ट यहाँ पर मेट्रोमैन है जिनको यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं हम लोग। राम सेतु जो बनाया है पूना से लंका और इंडिया के बीच में, मद्रास के बीच में, वो उस वक्त नील और नल इन्होंने वो राम सेतु बनाया, न डूबने वाले पत्थर ढूंढे, वहां पर उतने समय में उन्होंने बांधा है। आज भी विवाद चल रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ, साइंस के विविध मत है, लेकिन आज भी वहां पर वो ब्रिज है किसी न किसी रूप में। तो ये हमारा तंत्रज्ञान उस वक्त विकसित था। जैसे संजीवनी बूटी कहीं से लाना था तो किसी हमारे वैद्य को मालूम था कि वो संजीवनी बूटी ये पहाड़ पे है और हनुमान जी ने जाकर लाना है, और वो संजीवनी के द्वारा वो मूर्छित हुआ वो आदमी उसको जीवित कर सकता है। ये विज्ञान है। अब ये संजीवनी बूटी क्या है, इसकी खोज आयुर्वेद में होना चाहिए, है थी कि नहीं मालूम, लेकिन एक मूर्छित आदमी को सजग किया जा सकता है, ये साइंस है। ये साइंस का कहीं ना कहीं उजागर करने की जरूरत है, ऐसे हमें लगता है। अब होगा कि नहीं मालूम नहीं, करना चाहिए कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति जो कोसा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अन्य अनेक सालों के गुलामी की वजह से जो हमारा जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ही हुआ है, वो थोड़ा दूर करना जरूरी है। वो जो धूल है जो हमारे विद्वत्ता पे बैठी हुई, उसको थोड़ा साफ करने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये मान्यता आएगी। महाभारत में एरियल वारफेयर घटोत्कच द्वारा किया गया है, शक्तिवान कर्ण ने मार के अर्जुन को। अब ये शक्तिवान क्या होता है, वो वरदान क्या है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र, अस्त्र, अण्वस्त्र, इस तरह का उल्लेख है। अब ये क्या है, ब्रह्मास्त्र जो है आज क्या ये, वेदर इट मैचेस विद न्यूक्लियर वेपन, वेदर अण्वस्त्र मैचेस विद एटॉमिक वेपन, एंड what was the intellectual level of those rishis and munis who have pronounced this type of concept, that is अण्वस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरह की जो बातें की है, कुछ न कुछ तो होगा ना, इतनी सोच तो कहाँ से आएगी। तो ये जो हमारे संस्कृत में छुपा हुआ ज्ञान है, विज्ञान है, ये समाज के सामने उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास है। और हम लोगों ने सोचा है कि पहले 2-4 साल हम लोग इसको हमारे राष्ट्र के लेवल पर रखेंगे और कालांतर से नोबल अवार्ड के धरती पर इसको विश्व स्तर पर इसको लेके जाएंगे, ताकि हमारे ऋषि मुनियों की जो मान्यता है विश्व इसमें विज्ञान के और कला के क्षेत्र में, वो विश्व के सामने उजागर हो। एक हमारी कोशिश है। आप सभी का धन्यवाद। आपके अगर आशीर्वाद रहे तो निश्चित हम कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर भाल for giving the details of our Indian culture of some moments. आमच्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख उपस्थित आहेत। मी विनंती करते डॉक्टर भाल यांना की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। आणि श्री भगवान राऊत यांनी डॉक्टर भाल यांच्याबरोबर जाऊन माननीय अनिल देशमुख यांचं स्वागत करावं।
धन्यवाद. So as Dr. Bhal said, Hindu Research Foundation takes pride to acknowledge the achievements of such heroes who have contributed a lot to the mankind. A creative and intelligent man, no, I should say the creative and intelligent men who possess vision and the ability to turn dreams into reality. And how it is possible? By dedication, dedication and dedication. Success is no accident. It is a hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love and passion for what we do. And we can see here the perseverance, practical of perseverance, reality, and the real heroes. It's a time to express our sincere gratitude to all the 7 stars for their great contribution towards literature, society, science, and humanity. We are honored to have all of you here. Today is the day of celebration, and it's time for recognition of hard work and great achievements of all the felicities. Let us have a big round of applause for these special guests. We are truly honored by your presence today, and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. Let us start the program of felicitation. लेकिन उससे पहले एक मैं विनती करना चाहती हूँ. आज मंच पर महान हस्तियां विराजमान है. इन सभी का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. आप में से एक एक के लिए ऐसा एक कार्यक्रम आयोजन किया जा सकता है, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी आज एक मंच पर एक साथ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. लेकिन खेद की बात यह है कि समय की पाबंदी के कारण मैं आपके महान कार्य का और आपका विस्तृत परिचय यहाँ नहीं दे पाऊंगी. इसलिए आपसे और उपस्थित सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अगर परिचय देने लगूं तो कार्यक्रम वही रह जाएगा और परिचय ही देती रहूंगी. तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम फेलिसिटेशन और पुरस्कार प्रदान की शुरुआत करते हैं. लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम विथ डॉक्टर अनमोल सोनवणे. डॉक्टर अनमोल सोनवणे will be felicitated by Acharya Sushruta Puraskar. I request Prathamesh to kindly display artificial intelligence generated Acharya Sushruta. नमो नमः. समस्त अभिवादन. नमो नमः. मैं सुश्रुत प्राचीन भारत के आयुर्वेद का चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक. मेरा कालखंड 2900 वर्ष के पूर्व का है. अथक प्रयासों से और निरंतर प्रयोग के पश्चात मेरे द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में 164 प्रकार के शल्य चिकित्साओं का उल्लेख है. मेरे द्वारा मानव कल्याण हेतु ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में बंदिस्त है. उसका अध्ययन होना आवश्यक है, अन्यथा मेरे और मेरे पीढ़ी के परिश्रम पूर्वक द्वारा संचय किया गया ज्ञान व्यर्थ होगा. आज के अवसर पर मैं डॉक्टर अनमोल सोनवणे के योगदान की सराहना करता हूँ, जिन्होंने कष्टदायी हृदय की शल्य चिकित्सा को नया आयाम दिया है. उन्हें आचार्य सुश्रुत पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और अभिमान भी. उनके भावी जीवन के लिए और यश कीर्ति के लिए शुभ चिंतन करता हूं. धन्यवाद. डॉक्टर अनमोल सोनवणे is an experienced cardiologist from Kapurwadi, Thane. He is counted amongst India's leading interventional cardiologists with a primary focus on adult structural interventions, which includes transcatheter aortic valve replacement or implantation, transcatheter pulmonary valve replacement, transcatheter mitral valve replacement, and transcatheter tricuspid valve replacement, which is known as TAVR, TAVI, TPVR, TMVR, and TTVR respectively. कुछ समझ में आया? मुझे तो कुछ नहीं आया.
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. हम बस इतना याद रखते हैं, बहुत ही आसान है जमीन पर घर बना लेना, बहुत ही आसान है जमीन पर घर बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है. डॉक्टर सोनवणे जी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं दूसरों के दिलों में लिटरली प्रैक्टिकली जगह बनाने में. किस लिए जगह? एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट के लिए. अब समझ में आएगा. और सक्सेसफुल होने के बाद उस मरीज के दिल में अपने आप उनके लिए जगह बन जाती है. कार्डियोलॉजिस्ट होने के अलावा he is an associate fellow of American College of Cardiology, associate fellow of European Society of Cardiology, a member of Cardiology Society of India and Indian Society of Electrophysiology. In the year 2019, he was awarded Best Young Interventional Cardiologist and Youth Icon for TAVR and TAVI therapy by the Prime Minister of Mauritius. He is a national and international proctor for the TAVI technology and has played a pivotal role in improving the accessibility of TAVI procedure across India. Today, he is felicitated with the award that is Sushrut Award and Sushrut Puraskar. Sushrut, who is known as a father of surgery, not only he has described 164 surgeries in his Sushrut Samhita, but also he has given more than 120 equipments which are necessary for surgery. So today, I call upon the young, dynamic and dedicated Dr. Anmol Sonowne, please come forward. And I request Professor Penna ji to give him the Acharya Sushrut Puraskar. आपल्याला माहित असेल की हे जे पुरस्कार आपण देतोय या पुरस्काराचं स्वरूप शाल, श्रीफळ आणि 1 लाख रुपये हे त्यांना दिले जाणार आहे. Congratulations, Dr. Sonowne, and I now request you to kindly say few words on this occasion. First of all, Mananiya Chief Guest, all legendary and dignitaries sitting on the dais, and ladies and gentlemen. It is really an proud, honored, and overwhelming moment in my life to share this dais with such a great dignitaries today, and it is one of the most inspirational and motivational day in my life. I must congratulate T.S. Bhal sir for such a great initiative to revisiting our culture and our values in Saptarshi Puraskar. And I am getting this award today, Acharya Sushrut, as it has been nicely described. Sushrut was called to be the father of plastic surgery or father of surgery, which has been invented in ages before. But we are really not aware of all these things. I am getting this prestigious award for my contribution in what complex words Madam has explained, like transcatheter aortic valve replacement. If I want to simplify it, let me take you through this journey of transcatheter aortic valve replacement in India. In simple words, the transcatheter aortic valve replacement means we are able to replace and transplant the heart valve without open heart surgery. Without any cut on the body, we'll be able to replace and transplant this valve today. That is what this innovation is. It is one of the groundbreaking innovation in the field of cardiology. I remember any new innovation or new concept or new thought, whenever it comes, it always has to face through a lot of criticism. Similarly, the inventor of this therapy, Professor Alan Kriebier, who was thought of this replacing the aortic valve without open heart surgery in 1980s.
way back in 1980s. Then he has to go through a lot of criticism that time. People were laughing at him. It is not possible. How can it is possible? A human being who is alive, how can you deal with the main valve, which is when the heart pumps, it is the main valve which opens and supplies, blood goes through that and supplies the whole heart and the whole body. He has really worked for 15 to 18 years before, till 2002. 16th April 2002, the first in man, the heart valve replacement without open heart surgery has been done on this planet by Professor Alan Krieger. It took almost 11 to 12 years for it to come to India. The first heart valve replacement which was done in India in 2011 and second was in 2013, where my journey in transcatheter aortic valve replacement has started. Why it is important to replace the valve without open heart surgery? This disease is mainly a disease of elderly people. As the age advances, the valve degenerates. All these elder people are high risk for surgery, and some of them are not operable also. And if you don't treat this patient, the average survival of this patient is less than 1 year and less than even a major cancer patients. But if you treat this patient, the 5-year survival for this patient is nearly 5 years. 5-year survival patient is nearly 85% to 90%. In India, when I came back from my training from Istanbul and London in 2018, there were hardly 10 heart valve replacement has been done so far in that India by calling some expert from outside. When I have seen the only 2 companies who were preparing this valve and the cost of this therapy was exorbitant, then I thought how many of our people will afford this kind of therapy. Then I started working on to make made in India valves. And I started working on 2 Indian MNCs, Meril Life Sciences and Sajanan Medical Technology, and I am proud to share it today. We are able to make the Made in India valve today, and the valve is doing much better, and the 70% of our patients who are using a Made in India valve. And the cost which was very exorbitant earlier, because of Made in India valves, the cost of this therapy has gone down 50 to 60%. The second major hurdle was how to take this technology to every corner and how to take Made in India technology to every corner of the country as well as globally. So I started traveling across the cities, across the states, across the globe, and I am fortunate even to operate more than 1,000 patients in and heart valve replacement, not only in 18 states, 28 cities, but 32 countries in the world. And I am proud. This is one of the ray of hope for all the elderly people. They are able to get a ray of hope to replace their valve without open heart surgery today. And thank you so much for your patient hearing. The science is evolving very rapidly, and the day is not far when the India is going to shine on the global platform to export all these devices to the globe and to the world. Thank you so much. थँक यू डॉक्टर सोनवणे. देव तुम्हाला असंच यश देव आणि जास्तीत जास्त लोकांच्या हृदयावर तुम्ही राज्य करू. Our next award is Maharshi Valmiki Puraskar, and the recipient of this award is internationally famous and eminent poet Sudhakar Gaidhani, who is referred as Mahakavi in Marathi literature, and it's a pride for the Marathi literary world. I again request Prathamesh to display AI-generated Maharshi Valmiki. प्रणाम. मुझे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है. मेरा कालखंड त्रेता युग का है. तत्कालीन प्रचलित संस्कृत भाषा में प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मैं मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ और कौशल्यानंदन श्री राम जीवन काल का साक्षी एवं शाश्वत दृष्टा भी रहा हूं, और सापेक्ष रूप से मैंने उसे अनुभव किया है. मेरे द्वारा रचित रामायण नामक ग्रंथ को त्रिकालाबाधित बनाने और उसे अमृतत्व प्रदान करने के लिए समस्त मानव समूह का कृतज्ञ हूं. रामायण तत्कालीन प्रत्येक घटनाक्रम का ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण है. मैं प्रसन्न हूं कि महावाक्य देवदूत के रचयिता कविवर्य महाकवि श्री सुधाकर गायधनी जी को महर्षि वाल्मीकि मेरे नाम से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. मैं सुधाकर जी का अभिनंदन करता हूं और प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं.
धन्यवाद. महाकवी सुधाकर गायधनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ख्यातनाम कवी, पण त्याआधी ते नागपूरचे आहेत, त्यामुळे नागपूरचे आणि आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कीर्तीचे महाकवी सुधाकर गायधनी. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी यावर सारखंच प्रभुत्व असलेल्या या महाकवींचे 6 कविता संग्रह, 2 आधुनिक महाकाव्य, 3 नाटकं आणि अनेक नभोनाटकं प्रकाशित झालेली आहेत. यापैकी त्यांच्या देवदूत ह्या अत्यंत गाजलेल्या दीर्घ काव्याला अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार, साहित्य अकादमीचा पुरस्कार, मसपाचा कविवर्य नारायण राणे मसपाचा कविवर्य नारायण सुर्वे साहित्य पुरस्कार प्राप्त झालाय. मी अजिबात मुद्दामून केलेलं नाहीये. त्यांनी स्वतः लिहिलेल्या सईबाई भुलाबाई, राईबाई भुलाबाई या नाटकाच्या संगीत दिग्दर्शनासाठी उत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शनाचा महाराष्ट्र राज्याचाही पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. विदर्भ साहित्य संघाच्या 66व्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले आहे. जागतिक नाकारले आहे. जागतिक कला आणि संस्कृती अकादमीतर्फे त्यांना ऑनररी डिलीट इन लिटरेचर ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यांच्या कवितांचे भाषांतर तमिळ, हिंदी, कोकणी, बंगाली आणि गुजराती या भारतीय भाषांमध्ये तर झालेले आहेच, परंतु परकीय भाषांबद्दल सांगायचं तर इंग्रजी, रोमानियन, इटालियन, चायनीज, स्पॅनिश, मॅसेडोनियन, अरेबिक, स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ग्रीक, अल्बॅनियन, पोर्तुगीज, क्रोएशियन, टर्किश, ताजिक, व्हिएतनामीज इत्यादी इत्यादी इत्यादी. मला वाटतं एवढं एकच वाक्य त्यांची ओळख आणि त्यांचं आंतरराष्ट्रीय कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं आहे. पुढे काही बोलण्याची गरजच नाही. पण अभिमानाने सांगावंसं वाटतं ते त्यांच्या सन्मानाबद्दल. त्यांना राज्यातील, देशातील आणि जागतिक दर्जाचे अनेक पुरस्कार, मानसन्मान प्राप्त झालेले आहेत, ज्यामध्ये रोमानिया इथे दिला गेलेला विल्यम ब्लेक इंटरनॅशनल अवॉर्ड 2021ला, तसेच युरोपमधील प्रतिष्ठेचा, अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला गेलेला सिल्वर क्रॉस फॉर कल्चर वर्ल्ड मेडल हा पुरस्कार 2021 मध्ये त्यांना मिळाला. त्याशिवाय भूतान देशाकडून आंतरराष्ट्रीय शांतिदूत सन्मान त्यांना प्रदान करण्यात आला होता. तसेच महाकवी म्हणून ख्याती असलेल्या गायधनी यांना कोलंबिया, पेरू आणि बांगलादेश या राष्ट्रातील जागतिक साहित्य संस्थांकडून लागोपाठ 3 विश्व सन्मान प्राप्त झालेले आहेत. मला वाटतं असा एकमेव कवी आहे ज्याचा स्वतःच्या हयातीत त्यांच्या नावाने स्टॅम्प तयार झाला आहे आणि त्यांच्या नावावरती 2 कोटीचं गार्डन तयार आहे. मराठीतील अप्रतिम महाकाव्य असा अभिप्राय मिळालेल्या देवदूतचा जगातील 18 विश्वमान्य भारतीय साहित्य कृतींमध्ये समावेश झालेला आहे. एक गमतीची गोष्ट म्हणजे हिज ओन पोएट्री बुक वॉज इन हिज MA स्टडी एक्झामिनेशन सिलेबस इन नागपूर युनिव्हर्सिटी. ॲट प्रेझेंट हिज वर्क इज अवेलेबल इन सेव्हरल डिफरंट वर्ल्ड लायब्ररीज इन्क्लुडिंग लायब्ररी ऑफ काँग्रेस, वॉशिंग्टन, USA. मनावरचं मळप दूर करणारी, स्वतंत्र अस्तित्वाची, अमीट मुद्रेची, प्रतिभेच्या विशाल रूपाचा आविष्कार करणारी, जीवनाला चिंतनाकडे वळवणारी आणि अंतर्मुख करायला लावणारी अशी अनेक विशेषणं आपल्या कवितेला मिळालेली आहेत. कविवर्य, आपण म्हटलंय कविता म्हणजे अंतर्मनाच्या चिंतन मंथनातून बाहेर पडलेला सौंदर्यगर्भ असा उद्गार. तुका म्हणे माझे शब्द बुडोपरी अर्थ पाण्यावरी तरंगावा या उक्तीप्रमाणे तुमचा हा उद्गार संपूर्ण मानवजातीपर्यंत पोहोचावा हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आज अशा दिग्गज कवींना महर्षी वाल्मिकी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे. मला विशेष करून सांगावंसं वाटतं की काल अश्विनी पौर्णिमा, कोजागिरी पौर्णिमा संबंध देशभर वाल्मिकी जयंती म्हणून साजरी केली जाते आणि आज आपण त्यांना महर्षी वाल्मिकी हा पुरस्कार योगायोगाने प्रदान करण्यात आहे. नागपूरकरांच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा इथे खोवला जाणार आहे आणि निश्चितच सगळ्या मराठी माणसासाठी हा रोमहर्षक क्षण आहे, अंगावर मुठभर मांस चढणारा क्षण आहे. मी विनंती करते प्रोफेसर पेन्ना यांना, त्यांनी महाकवी गायधनी
यांचा महर्षी वाल्मिकी हा पुरस्कार देऊन सन्मान करावा आणि महाकवी गायधनी यांना विनंती करते की त्यांनी हा सन्मान स्वीकारावा. धन्यवाद. सोनं पांघरून नाही मी वेगळं सांगते. सोनं पांघरून सोनंच विकणाऱ्या आणि शब्दांचंही सोनंच करणाऱ्या महाकवींना मी विनंती करते की त्यांनी सोन्यासारखा त्यांच्या रसिकांसाठी आणि चाहत्यांकडे आता संवाद साधावा. सर्वप्रथम तुम्हा रसिकांना माझा मानाचा मुजरा. तुम्ही नसाल तर काही होऊ शकत नाही, मंच शून्य होऊन जाईल. या कार्यक्रमाचे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय स्वामीजी आणि हे सर्व या पृथ्वीवरचे महापुरुष. मी कवी असल्यामुळं मी स्वतःला पृथ्वीचा नागरिक समजतो आणि हे सगळे कोण्या एका देशासाठी, कोण्या एका प्रदेशासाठी नव्हे तर पृथ्वीसाठी राबणारे हे प्रतिभावंत आहे. यांनाही मी मानाचा मुजरा करतो. आज या नागपूर नगरीमध्ये हा जो समारंभ दुसऱ्यांदा होतो आहे आणि 7 लोकांची जी निवड केलेली आहे, मी माझ्या महावाक्य या कवितेचा आधार घेऊन पुढचं थोडक्यात सांगतो आहे. तत्पूर्वी मी जसा या महानुभावांना मानाचा मुजरा केला, किती मोठी माणसं आली आहे. एक एक माणूस म्हणजे पुरस्कारांच्या पलीकडे ज्यांचं व्यक्तिमत्व गेलेलं आहे अशी ही थोर माणसं. आणि आता माझा परिचय ज्या व्यक्तीने करून दिला त्या सभा संयोजक, मी सूत्रसंचालक म्हणणार नाही, हा शब्द खूप जुना आहे आणि सूत्रसंचालन म्हणजे कोणीही करतं, पण एवढी विद्वत्ता असलेली व्यक्ती या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करीत आहे त्या आहे डॉक्टर अनिता तिळवे. ही साधी गोष्ट नाही. त्यांच्यासाठी आपण एकदा, कारण प्रत्येक या महानुभावाबद्दल तुमच्या मनामध्ये आधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी, तुमच्या मनाची तयारी करून देण्यासाठी ते काम जे करताय ते साधं काम नाही. असो, मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला सांगतोय. मला आनंद होतो याचा की 40 वर्ष आधी, 42 झाली असतील, माझा जेव्हा देवदूत हा मराठीमध्ये पहिला खंड निघाला तेव्हा डॉक्टर TS भाल यांच्या हातात तो पडला. म्हणजे त्यांच्याकडे आला तो ग्रंथ. त्यावेळेला ते अमरावतीला सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस होते. फार दरारेदार ऑफिसर म्हणून त्यांची ख्याती होती. या अशा डिसिप्लिन, अगदी कडक शिस्तीच्या माणसाने माझं पुस्तक वाचल्यावर अगदी गहिवरून म्हणा की रसाळ हृदयातून मला पहिलं दीर्घ पत्र लिहिलं. तत्पूर्वी तशी समीक्षा किंवा रसग्रहण कुठल्याही महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकाने केलेलं नव्हतं. म्हणून मी आज त्यांनाही मानाचा मुजरा करतो. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. पोलीस म्हटलं की आपल्यासमोर दंडुका आणि एक वेगळा ड्रेस येतो, परंतु कितीही झालं तरी पोलिसाचं हृदय जसं त्यांच्या मुलासाठी आणि पत्नीसाठी, नातलगांसाठी घरी असतं, तर ते म्हणजे त्यांचं हृदय त्यांच्या सोबत असतं आणि त्याचं दर्शन मला झालं. मित्र हो, वाल्मिकी महाकवी वाल्मिकी
ऋषी वाल्मिकी, महर्षी वाल्मिकी यांच्या नावाचा पुरस्कार घेताना मला खूप आनंद झालेला आहे. मला थोडं मोकळं बोलू द्या, जास्त वेळ घेत नाही, तरी सांगतोय की मोठमोठ्या ऋषींची नावं आमच्या प्रतिष्ठित मोहल्ल्यांना असतात. वाल्मिकी नाव खूप गावकुसाबाहेरच्या लोकांच्या वस्तीला असतं. आलं की नाही लक्षात? वाल्मिकी नगर. पण डॉक्टर टी.एस. भाल आज यांनी रामायणाच्या कर्त्याला, जो गावकुस म्हणजे त्या कर्त्याला जे गावकुसाबाहेरचं त्याच्या नावाचं स्थान मिळत आलं, त्याला आज या राष्ट्रीय मंचावर आणून हा गौरव प्राप्त करून दिला. त्याबद्दल माझ्याजवळ त्यांच्यासाठी शब्द नाहीत. खरंच सांगतो, ही खूप महत्वाची नोंद आहे. थोडं देवदूत विषयी बोलावं असं मला त्यांनी सांगितलं होतं. हा पक्षी याच्यामध्ये जास्त म्हणजे बघा की मला लहानपणी मी स्वप्न पडायची की मी आकाशात पक्षी रूपात उडतो आहे, आणि त्यामध्ये अनेकदा मी खाटेवरून खाली पडलो. माझ्या आईला काहीतरी बाधा वाटली, भूतबाधा, आणि मला काळा दोरा बांधला, जो अजूनही माझ्या गळ्यात आहे. नंतर माझ्या लक्षात आलं की तो एक मला मेडिटेशन मधून प्राप्त झालेला साक्षात्कार होता. ही सगळी माणसं आहे, माफ करा मला काकोडकर सर, तुमच्यासारख्या व्यक्तींसमोर, तुम्ही तर मराठी समजता पण यांना माझी भाषा कळत नसेल, पण मला मराठीतच बोललं पाहिजे. तर हे माझ्या महावाक्यात आहे आदरणीय काकोडकर सर की जेनेटिक जर्नी ही सातत्याने सुरू असते. हे जे 7 ऋषी त्या काळात झाले होते ते त्या जेनेटिक जर्नीतून, प्रवासातून आज या मंचावर आलेले आहेत, आणि हे पुढेही येणार आहे. आपला पुनर्जन्म म्हणजे आपली अपत्य असतात, आणि अपत्यांपासून दुसरी अपत्य निर्माण होत जातात, आणि जीन्स मधून आपल्या स्मृती प्रवास करतात. काहींच्या नष्ट होतात, काहींच्या राहून जातात. योगायोगाने माझ्या राहिल्या. आणि या कवितेतला हा पक्षी मी जेव्हा मांडला तेव्हा महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये माझ्यावर टीका झाली की असा पक्षी अस्तित्वात असू शकत नाही, हा अतिवास्तव कल्पनेतला पक्षी आहे, अशी टीका झाली. आणि त्या टीकेमुळे मला खूप दुःखही झालं होतं. पण माझा पहिला खंड देवदूतचा 81 साली प्रकाशित झाला, हे तुम्हाला थोडं सांगितलं पाहिजे जे माहिती नाही. आणि 87 साली स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूट वॉशिंग्टनने एक फॉसिल शोधलं पक्ष्याचं, साऊथ ईस्टर्न अमेरिकेच्या एका भागात. आणि त्या पक्ष्याची जी काही म्हणजे तो पक्षी, त्याच्या सवयी किंवा त्या पक्ष्याची जी काही रचना होती त्याचं साम्य माझ्या देवदूत या पक्षाशी जुळलं. आणि ही घटना एक सुरेश खेडकर नावाचे माझे मित्र आहे, कवी मित्र, त्यांनी हितवाद मध्ये प्रकाशित केली ही बातमी आल्यावर की तुमच्या आधी आमच्या नागपूरच्या कवीने असा पक्षी चितारलेला आहे आणि त्याचं साम्य या पक्षाशी आहे. मी ते कटिंग्स घेऊन आणि देवदूतचे ट्रान्सलेटेड इंग्रजी भाग घेऊन ते स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूटला पाठवले. त्यांनी मला लागोलाग 2 पत्र पाठवून या पक्षाला मान्यता दिली. त्यांनी लिहिलं आहे, इट इज ए रेअर ऑकेजन वेन सायन्स अँड पोएट्री कॅन मीट सच ए सिमिलरिटी. अशा प्रकारचं मला पत्र पाठवलं. तर हा पक्षी विद्यमान होता. आता हे देवदूत मध्ये इथे हे सगळे स्पेसचा सुद्धा अभ्यास करणारी माणसं आहे. त्याचा इंग्रजीवरून रोमानियन झालेला अनुवाद या नोव्हेंबरच्या फर्स्ट वीक मध्ये हे 555 पेजेसचं पुस्तक रोमानिया या देशात युरोपियन प्रकाशकातर्फे प्रकाशित होत आहे रोमानियन भाषेत. ही नोंद यासाठी सांगतोय की त्या मंडळींनी फार मला त्या बाबतीमध्ये खूप काही लिहिलेलं आहे, बोललेलं आहे. ते इथे आज मी सांगणार नाही, पुस्तक आल्यावरती बातमी तुम्हाला माहिती होईल. आता तुम्हा लोकांबद्दल मगाशी मी बोललो
कवी किंवा कलावंत हा अभिव्यक्त झालेला कलावंत आहे. कवी हा अभिव्यक्त झालेला कलावंत आहे आणि रसिक हा अव्यक्त कलावंत आहे. तुम्ही म्हणून कलावंतापेक्षा अधिक महत्वाचे आहात. तुम्ही रसिकतेची पावती दिली नाही तर आमचं मूल्यमापन होऊ शकत नाही. रसिकाने दिलेल्या पावतीमुळे सगळे कलावंत युगे युगे लक्षात राहतात. मित्र हो, आजचा हा पुरस्कार मी नम्र भावे माझ्या मागील प्रेवीय स्मृतींच्या सह मी या महापुरुषाला महर्षी वाल्मिकी महाकवी यांच्या चरणावर समर्पित करतो. या पैशाचा मला माझ्या साहित्य निर्मितीसाठी उपयोग होईलच. कारण कवी असतो पृथ्वीचा परम लाडका पुत्र, प्रति सृष्टीचा फकीर आणि अभाग्यांचा मित्र. अशी आमची अवस्था असते. एक शेवटची छोटीशी कविता. माणूस असे जगावे की बागेतल्या फुलांचे कुणी गजरे कुणी हार व्हावे. माणूस असे जगावे की बागेतल्या फुलांचे कुणी गजरे कुणी हार व्हावे. माणूस असे खल्लास होत जावे की जसे हळूहळू कुप्पीतले अत्तर उडावे. अलमस्त जगावे मौज करावी लुटून घ्यावा काळ. जशी झटकली सकाळ राजा तशीच संध्याकाळ. दुनियेची अरे लूट करावी लुटीत लुटावी व्यथा. दर्याच्या शाईने लिहावी दर्दे नभावर कथा. ज्या ग्रहावर माणूस आहे तिथे तितंबा भारी. या स्थळाला जरा थांबुनी घ्यावी उंच भरारी. हे सगळ्यांच्या वाट्याला येणार आहे. जाता जाता माझ्या महावाक्यामध्ये निर्माता आणि ईश्वर असा संवाद आहे. सहा ब्रह्मांड पार केल्यावर 7व्या ब्रह्मांडामध्ये निर्मिकाची भेट होते त्या यात्रेकरूंना जे इथून गेलेले आहे. यामध्ये एक महाकाय पक्षी, त्या महाकाय पक्ष्याचं असं आहे की रामायणामध्ये पारध्याच्या बाणाने क्रंच पक्षाचा वध झाला आणि त्यात दुःखी होऊन महर्षी वाल्मिकींनी रामायण त्यांना सुचलं. माझ्या महावाक्यामध्ये जो महाकाय पक्षी आहे तो समुद्र पक्षी आहे. तो युगे युगे उड्डाणे समुद्रावरून करायचा. एके दिवशी पारध्याच्याच मुलाने त्याला बाण मारला आणि जखमी होऊन तो एका आयलँडवर कोसळला. आणि मरायच्या आधी त्याच्या भोवती जमलेल्या पक्षी समुदायाला त्याने ब्रह्मांडाचं दर्शन करवलं. त्यामध्ये तो म्हणतो की हे बाबांनो, हा निर्मिक आहे ना, हाच या सृष्टीचा करता करविता आहे. मग ते विचारतात पक्षी, मग देव कसा आला? तो म्हणाला, तो प्रश्न मी मानवाच्या स्वाधीन केला. मानवाने देव निर्माण केला, त्याच्यासोबत धर्म निर्माण केला. म्हणून तो देव प्रत्येक धर्माचा देव यांनी वेगळा करून टाकला. माझ्या दृष्टीनं तुम्ही प्रत्येक जीव प्रत्येक सृष्टी समान आहे आणि मनुष्याला मी या ग्रहावर पृथ्वीवर पृथ्वीचा पालक कुणाचा? वनस्पती पशु पक्षी सगळे जीव जंतू मनुष्य सोडून जेवढे आहे त्यांचा पालक म्हणून मी मनुष्याला तिथे पाठवलेला आहे. ते पालकत्व तो नीट पाळत नसेल तर मला पुनर्विचार करावा लागेल. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण नुसतेच मोठे कवी नाही आहात तर मोठ्या मनाचे कवी आहात. मुद्रण दोषासारखे माझ्या बोलण्यातले दोषही आपण बाजूला ठेवले त्याबद्दल धन्यवाद. ही सगळी मोठी व्यक्तिमत्व आज व्यासपीठावर बसली आहेत आणि यांनी आपली सुंदर कविता ऐकवल्यावर मलाही बाबा बोरकरांच्या 4 ओळी आठवल्या. धन्य ती जीवने जी तृप्तीची तीर्थोदके, धन्य ती जीवने जी तृप्तीची तीर्थोदके, चांदणे जातून फाके शुद्ध पार्यासारखे. धन्य तो देहांत जो सागरी सूर्यास्तसा, अग्नीचा पेरून जातो रात्रगर्भी वारसा. धन्यवाद. Now proceeding ahead with the program, we are felicitating Padma Shri Dr. Ganpati Yadav with Nagarjun Puraskar. I request to display artificial
intelligence generated, अभिवादन। Nagarjun. मैं नागार्जुन। मेरा कालखंड आज से 2000 वर्ष पूर्व का है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि प्राचीन काल में मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा रसायन और धातु शास्त्र के विषय में अनेक अमूल्य आविष्कार किए गए हैं। वह रस रत्नाकर, रस हृदय और रसेंद्र मंगल इन ग्रंथों में समाविष्ट है। इन प्राचीन ग्रंथों में रसायन शास्त्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख है। आपके द्वारा उसे फिर से स्मरण करके पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह अत्यंत गर्व और स्वाभिमान की बात है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आचार्य श्री गणपति यादव जी ने अपने कठोर परिश्रम, जिज्ञासा, प्रकांड विद्वत्ता और अखंड आत्मविश्वास से नैसर्गिक रसायन विज्ञान और विशेष रूप से ऊर्जा अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रेरणास्पद आविष्कार किए हैं। आचार्य श्री गणपति यादव जी को मेरे नाम से स्थापित नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित होते देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। Thank you. Dr. Ganpati Yadav is an Indian chemical engineer, inventor and academic known for his research on nanomaterials, gas absorption with chemical reaction and phase transfer catalysis. He is known to have done pioneering research on catalysis with special focus on nanomaterials, green chemistry, nanocatalysis, energy engineering and biotechnology. He served as a Vice Chancellor of the Institute of Chemical Technology, VD City, Mumbai from 2009 to 2019 and currently he is the Emeritus Professor of Eminence at ICT Mumbai. The Government of India awarded him 4th highest civilian honor of the Padma Shri in 2016 for his contribution to science and engineering. In 2022, he was elected member of the United States National Academy of Engineering. He holds several Indian and US patents, reported to be 75 of them for his inventions and innovations. His researches have been documented by way of 3 books, 15 book chapters, and over 350 research papers. Dr. Yadav is a recipient of many prestigious awards, medals, and recognitions from various institutes in and outside India. He also has delivered several award orations. Today, Dr. Yadav will be felicitated with Nagarjun Puraskar, who is the ancient Indian chemical scientist. And besides Ayurvedic physician, he was also known as the father of hydrochemistry because of his work on the benefits of specifically treated minerals known as bhasmas. I request Dr. G.D. Yadav to come forward and accept the award, and I request Chief Guest of today's function, Sri Hansaraj Ahir, to do this honor. अभिनंदन डॉक्टर गणपती यादव सर. मी आपणास विनंती करते की आज या प्रसंगी आपण उपस्थितांशी हितगुज करावं. At the very outset, I want to thank Dr. T.S. Bhal and the Hindu Research Foundation for bestowing upon me this very important honor. Last night, he was telling many things, and one of the things he said about the ancient scriptures and the literature and the wisdom which is there.
So, Kanad Muni, you mentioned, he talked about atomic structure. The modern science says Dalton was responsible for this atomic structure. Dalton had studied only up to 4th grade, 4th standard. And he was colorblind, but his imagination was far ahead of his time. So you can imagine what Kanad must have thought several centuries, millennia rather, ago about atomic structure. And that time he wanted to give a scientific vision to the society, and the society did not listen to him. So what he used to say, Urdhva bhavu viram meshu nahi kaschita shrunoti mam. मी हात वरती करून लोकांशी बोलते पण माझं कोणीही ऐकत नाही. That is what he said. And he died saying pilava, pilava, pilava. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल. So it's a great thing what you have done. And I must appreciate Hindu Research Foundation. But something which yesterday I said, and I want to tell it again, is that we have in our scriptures, in our religion, Brahma, Vishnu, Mahesh as the Trinity. In terms of the scientific trinity, it is solar energy, wind energy, and hydrogen energy. So everybody knows. In this, I assume hydrogen as the prime devas. Devas in Sanskrit means deity. Bhagwan. Okay. So why hydrogen should be the prime devas? The reason is that by 2050, we will not have any crude oil. We will not have any crude oil. It will be all gone, dead. So what are you going to do with it? So that is the time we will be using all waste biomass, purposely grown grasses and other others. And in that, hydrogen will play a very, very important role in converting all these things into materials, chemicals, polymers, whatnot. And our government of India's policies now, they have declared a hydrogen mission and hydrogen policy, green hydrogen in that. Believe me, hydrogen doesn't have any color, but people think green hydrogen means what? Green hydrogen means that you split water and get hydrogen. So non-carbon sources is green hydrogen. Blue hydrogen means because every hydrogen ton, which is now hydrogen also is used by refineries. 1 ton of hydrogen produces 11 tons of carbon dioxide, and that is the greenhouse gas. And we don't want that. If you capture 90% of that, that is blue hydrogen. So refineries produce grey hydrogen. If you produce it from coal, it will give 19 tons of carbon dioxide. So you can imagine. So very recently, Government of India, just I think about 3 weeks ago, they said our green hydrogen definition will be 2 kilo of carbon dioxide per kilo of hydrogen, which is not acceptable to international community. But this is an incentive to our industry. That is why it is accepted. But it is okay. So hydrogen will help us. Hydrogen can be used in fuel cells, in 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers, SUVs. And what people think hydrogen is dangerous, hydrogen is not dangerous. Hydrogen is safer than petrol and diesel. Okay, so let it be known. Hydrogen is not deuterium. Hydrogen bomb is deuterium bomb. Okay, so it is not that. So that is one misconception about hydrogen. And decarbonization. We are talking about decarbonization of economy means we don't want to have carbon going into the atmosphere. We want carbon in the soil. We want carbon for our survival, but we don't want carbon in the atmosphere. That is decarbonization. And currently, last year we emitted as a world 36.4 tons, that is 36.4 billion tons of carbon dioxide. And that has to be brought down to 10 gigatons. So-called net zero. People talk, all politicians talk about net zero without knowing what it means. Net zero means that the carbon dioxide which you generate must be converted back into something. Maybe plant more trees, but how many trees you can plant? So we have to develop technology to take carbon dioxide from atmosphere,
convert it into chemicals, materials, fuels. For example, carbon dioxide can be converted into methane, it can be converted to methanol, it can be converted to dimethyl ether, it can be converted to formic acid, and dimethyl ether is a very good substitute for LPG gas and diesel. So my personal belief is that, and India has committed to have 900 gigawatts of green energy by 2030. And hydrogen is going to play a very important role. Our aim is to have 5 million tons of hydrogen by 2030. But by the year 2050, the whole world will require 540 million tons of hydrogen. And I think India should take a lead, have at least 20% of that hydrogen. So we have to encourage our our industry, have policies. Our researchers must do research in that area, and I'm simply lucky to receive this award because I've been working on hydrogen for a number of years. My partners are ONGC Energy Center. We have developed technology where we can produce hydrogen in less than $1, and we are going to have a big pilot plant in Goa. We have also developed technology for methanol. We have developed technology for dimethyl ether and also hydrocarbons, and we are going to do LPG as well. So we are doing higher hydrocarbons. So ladies and gentlemen, you honored me. I accept this with all humility at my command. This belongs to my students. They work in my lab. I may have been their guide, but yes, they work in my lab. And so receiving that in the name of Nagarjun was such a great, he was also, Rasayan Shastrajna, right? He was a metallurgist. And I want to tell you, I wrote a poem in Marathi on Rasayan Devika. I created a Rasayan Devi. And you can see that in the YouTube, it is available. And that is the university song, Vidyapit Gift of ICT Mumbai. Being a vice chancellor, I wrote this poem. Nobody knew who wrote it. And everybody liked it. Then I announced that I wrote the poem. And that was released by that time Chief Minister Prithviraj Chavan, in 2012. So you can see that poem has everything in that. Well-being of every individual, every life, the combination of biological sciences, chemical sciences, solar energy, wind energy, and that Rasayan Devika is that symbol. Not only that, we've made a statue of Rasayan Devika. It is there in ICT. So so I'm really delighted. It's a matter of coincidence that Nagarjuna Award is given to me. I never imagined. And so once somebody came from abroad and asked, what is this? So I said, I created we have so many Devis. Right? I created a Devi for Rasayan because I'm a chemical engineer, Rasayan scientist. So I created this Devi. And you can, even now Google search, you will get it. It is a very interesting poem which talks about wellness of the society at large. So once again, I bow before you, accept this honor, on behalf of my Institute of Chemical Technology. But I also want to add something which she missed. I have produced 110 PhDs, which is a record in the country. For any engineering professor, it is a record in the country. 147 masters, 48 postdocs, 551 papers, and 123 patents. For that, I got the US Academy of Inventors Fellowship, and I'm the only second Indian to get that fellowship. That happened this June. So I'm very happy to receive this, and I thought I should tell you this because some of this you did not mention, but I thought I should mention. I must mention it with all humility at my command. Thank you very much. Thank you very much. And as they say in Rigved, Ano Bhadra Krutu Yantu Vishwata. Let good thoughts come to us from all directions. Thank you. Thank you, sir. मी आपला बायोडेटा लिहिलाय त्याच्यामध्ये करेक्शन करीन, परंतु करेक्शन करेपर्यंत आपल्या पेटंटमध्ये आणखीन वाढ झालेली असेल असं मला वाटतं. Next in the line is
Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar. He will be felicitated with Aryabhatta Award. I request Prathamesh to display Aryabhatta. समस्त अतिथि गण को अभिवादन। मैं आर्यभट्ट हूं। 1500 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा खगोल शास्त्र और गणित के विषय में अनेक सिद्धांत प्रमाणित किए गए हैं, जो मेरे द्वारा लिखित आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में प्रतिपादित है। शून्य का सिद्धांत जो अनंतता का मूल्यांकन दर्शाता है, वह मेरी ही खोज है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा की गई खोज को आधुनिक जगत का विद्वत समूह प्रमाणित कर रहा है। यह मेरे द्वारा किए गए परिश्रम का सम्मान और मेरे जीवन की सार्थकता समझता हूं। आज 1500 वर्ष के पश्चात मेरे नाम से पुरस्कार निश्चित किया गया है और सप्तऋषि के श्रृंखला में मुझे समाविष्ट किया गया है, इसलिए मैं कृतार्थ हूं। आज मैं अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि मेरे नाम के पुरस्कार से भारत के परम महासंगणक के पिता पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर को सम्मानित किया जा रहा है। मैं उनके संशोधन को अभिवादन करता हूं और उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद. अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील मुरंबा या अवघ्या 250-300 लोकवस्तीच्या छोट्याशा गावातून निर्माण झालेलं हे मोठं जागतिक कीर्तीचं व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर विजय भटकर. ही हॅज डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम मूर्तिजापूर, देन completed electrical engineering degree from Nagpur, post graduation from Vadodara University and obtained his PhD from IIT Delhi. An important thing is that while completing his education, he read about 50,000 books of different topics, subjects and of various contents. There were, hats off to you sir, there were many offers from foreign countries, but according to Dr. Bhatkar, nation cannot be developed on borrowed technology and therefore he preferred to be in Bharat and has done tremendous work for the society. आप एक भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक, आईटी नेता और शिक्षाविद हैं. आप सीडैक दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक है. इसी सीडैक में सुपर कंप्यूटर बनाने की परियोजना का आपने नेतृत्व किया था और परम कंप्यूटर के निर्माता के रूप में आप जाने जाते हैं. परम 8000 और परम 10,000 इसी के तहत भारत ने बनाया था. कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन काम और योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं. सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ. 2000 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण से आपको नवाजा. इसके अलावा विदर्भ गौरव भूषण, विदर्भ भूषण पुरस्कार, विज्ञान गौरव पुरस्कार ऐसे अनगिनत पुरस्कार आपको मिले हैं. सन 2015 में पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार ने उन्हें दिया. उन्होंने अब तक 12 किताबें और 80 से अधिक शोध का संपादन एवं लेखन किया है. इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर भटकर जी को प्राप्त हुए हैं. भारत की सभी पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र ये ज्ञान तीर्थ क्षेत्र बने, ऐसा बदलाव लाने के लिए उन्होंने आनंदी तीर्थ क्षेत्र से काम की शुरुआत की है, जिससे विज्ञान और अध्यात्म दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है. यह विश्वास आपका सार्थ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए डॉक्टर भटकर जी को आज आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. आर्यभट्ट, who has written Aryabhatiya, has given explanation of lunar eclipse and solar eclipse, rotation of earth on its axis, reflection of light by moon, value of pi, correct up to the 4 decimal places and so many other important things. I request Dr. Vijay Bhatkar to please accept Aryabhatta Puraskar, and I again request our chief guest of today's function, Sri Ahir, to kindly do this honor.
Congratulations, sir. We are pleased to have you with us. I request you to enlighten us with your valuable thoughts on this occasion. Yesterday I was traveling with Dr. T.S. Bal, who is the very inspiring leader for all of us. What a man can accomplish, what a leadership can accomplish. Yesterday I was experiencing that. Man from Nagpur has done such a distinguished service to science, to Vijnan. Not many people has brought forth the contribution of ancient Indians, rishis, to science and to the whole humanity. Yesterday when I was traveling with him, he told me so many things, that were very, very inspirational. I've been talking about the synthesis of science and spirituality again and again, and this has, of course, is not mine. These two distinctive fields, what is thought, are distinctive. We have come to know through the recent Nobel Prizes last years that what the Vedic science discovered, you have been talking about it, is again being reconfirmed by which is confirmed by our Vedic rishis. These scientists have now received Nobel Prize and brought great things to the Vedic sciences. I never thought this will happen so soon. And our Vedic sciences and the modern sciences will start converging together. With the new education policy, our architect is here. We'll talk once again we start resurrecting that knowledge and bring before the modern students, modern scientists. I am very pleased that what I thought it will take years together, that our curriculums of the new curriculum which is emerging as a result of the new education policy will once again revive the ancient sciences so well, this sort of thing. When we talk about with my own field, electronics, one science which will contribute, which will transform India inside out remarkably, is electronics and computers. Is transforming India. The whole skyline of cities and Nagpur and all cities in India and all that has been changed by one science, which I should not claim that
It is a contribution of electronics and computers. Even the hall we are sitting today is a great creation of Dr. Deshpande, who is also from Nagpur. When I was invited to the concept of supercomputers, which we required at that time, very badly required, and we are almost humiliated to the point it was denied to Rajiv Gandhi when he went for the negotiations on advanced technologies. And then happened to be me and my secretary at that time, KPV Nambiar from Keltron, and when we were invited, Rajiv Gandhi asked me a question, can we not develop, while after he came back from the US, or can we develop supercomputers? I said, I have not seen a supercomputer, but I have seen the picture of supercomputer. And by studying the architecture of that time supercomputers, I said, why we have the great inspirations from Dr. Bhabha, Sarabhai, and such great scientists. I said, I will intuitively say that, spontaneously say that we can develop a supercomputer. I had not seen a supercomputer, but I have seen the image of supercomputer. There is how much time it will take to that stage. I said it will take the same time as bringing one supercomputer from the US, and we already spent that much of time. We can develop these supercomputers in the same time, bottoms up in 3 years' time. Then he smiled, and I was watching him. And what is the expenditure? Naturally, every Prime Minister is interested in all the scientific projects, and so how much time it will take and how much money it will take. I said it will take the same time. Humbly we were talking about. That cost will be same as cost of one Cray supercomputer, which was available at that time, was the only supercomputer available at that time from the US. And he smiled. And without taking any time, he responded that the mission, supercomputing mission, which was proposed as a mission, is approved. And we embarked on the journey of that. And we developed it within 3 years. No chips were available at that time. No critical technology was available at that. Were denied to us. We did not know how to write like so many IT engineers are here in this hall, persistent hall kind of things. And we see that kind of thing. What we can accomplish. What the magic, I myself did not know that this magic will happen. We'll start developing softwares in such a manner that this software will create the entire image, will change the image of India, and never after that the Indian image remain the same. And what we see today, I think that I've seen before my eyes what transformation technologies can bring about. My dear friends, and what has happened? One after another, India started making the color televisions and all. Today, Asian Games are happening. We are transmitting this one. All these basic technologies were developed by India much before even the Asian countries of Korea, this one, and other, Japan. I also remember that when the supercomputer was denied to us, the technologies were emerging very fast in computing. And when I was asked to develop a supercomputer with my team,
very competent team coming from all engineering colleges of India, IITs, and did not come, IT engineers did not come at that time. These engineers did not know how to write a compiler. Even I would say the BRC did not know how to write a compiler or so on. At that time, our engineers accepted the challenge. Grounds up, they developed the compilers like softwares, and these softwares, we could develop India's supercomputer grounds up. Today, the situation is such that every supercomputer, I think, which is to be imported in the country, is no more imported. All the research labs, all the academic institutions are having India's supercomputers for the advanced research and education. No supercomputer is imported in the country today. We never anticipated that this will happen. I did not happen because we always loved to import things. When Modi started that, we must manufacture everything ourselves, and that was a big challenge for us, for many scientists. This one, and that is actually when Prime Minister declares that we will not import critical technologies also from abroad. That is, people inspire so many people, and we are now remarkably developing all major critical technologies in India, and we are all proud of it. Friends, tomorrow one technology which is advancing very fast is artificial intelligence. Today we have seen the demonstration of AI technologies, that our ancient rishis are appearing before us. We can actually, this will also happen. They will come before us and talk to us and introduce as they have introduced themselves, and that in their image, in their inspiration, we are bestowing the awards in their name, which is Dr. Bal. I really appreciate this, that the young students or young scientists of today this will really create love for our ancient rishis, who have, I think, made what India is today. Our India's heritage is because of them, our rishis, and who themselves were scientists. This is a message for young students. On creating such advanced technologies, the Nobel Prizes are being awarded, and the concept of what they advanced years and years before. And I am very pleased to see this. In the way science and spirituality is now converging, and now they will become almost one. I imagine they will almost become one, and indistinguishable from each other. So I am really, by getting the award in the name of Saptashing, Sapta Rishis, by getting the awards today in the name of Sapta Rishis like that, we are very proud of them. We'll read what these rishis, our rishis have contributed, Vedic rishis have contributed to not only Indian science, to the world, I think, the knowledge system. And today, the education policy, we talk about the Indian knowledge system, which is actually the world knowledge system. We never believed it belonged to a particular nation. And Anu Bhadra, Krato, Antu Vishwada, is a world knowledge. And we are very proud of it. And I am very proud of that this science is contributing to the development of the entire world, like never before, this one. But we have cautions to be exerted, that they are all also the destructive power
the way science is advancing, it can destroy the entire humanity also simultaneously. It can, the AI, I think what is created, what people are wondering, what artificial intelligence can do, can undo the entire contributions of many sciences put together. And people are worried about that kind of thing. So the young people must exercise that advancement, not exercise this one, but remember that it has the potential to destroy whatever we have developed within no time, kind of thing. Many people are worried on that. But our young people would be very wise people. And that's why I say that the science and spirituality, contributing to advancing the wisdom of society, must come together for the survival of humanity and for the prosperity of humanity. I hope this, I request God to fulfill that wish, and India will emerge. Indian science will emerge. World science will emerge with this wisdom, and with this wisdom will go into the future of our humanity. Thank you very much for the invitation. Thank you, sir. Thank you for your inspirational talk and valuable thoughts for youngsters. भारतीय संस्कृतीमधील विज्ञानाचं महत्त्व आपण वेळोवेळी सगळ्यांना पटवून देत असता. मला आठवण आहे, खूप वर्षांपूर्वी आपण गोव्यात आला होतात आणि एका अनाथाश्रमातल्या मुलांना त्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये संध्याकाळी परवाचं म्हणणं का गरजेचं आहे, त्यामुळे जिभेला कसं वळण लागतं, त्यामुळे आपल्या मेमरी ग्लँड्स कशा उद्दीपित होतात आणि मेमरी वाढायला कशी मदत होते हे त्यांच्या भाषेत आपण त्यांना समजावून सांगितलं होतं. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर जी को आचार्य कणाद पुरस्कार से सम्मानित करते हैं. आई रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्ले. नमो नमः. मैं आचार्य कणाद. मेरे समय में मुझे परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है. मेरा कालखंड आज से 2900 वर्ष पूर्व का है. मेरे आविष्कार के अनुसार मनुष्य के सामान्य चक्षु द्वारा अदृश्य प्रतीत होने वाले अणु, रेणु और परमाणु की शक्ति सहस्त्र सूर्य के सामर्थ्य से भी अधिक विध्वंसक और संहारक एवं अमर्याद, अविरत और अविनाशी भी है. 2900 साल पूर्व के मेरे द्वारा किए आविष्कार को लेकर मुझे स्मरण किया जा रहा है. यह मेरा सौभाग्य है. आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्वमान्य परमाणु वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है. परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण प्रकार से मानव कल्याण के लिए करने का मेरा हेतु एवं विश्वास उनके कार्य में प्रतीत होता है. ये मेरे लिए अतिशय गर्व का क्षण है कि महर्षि कणाद नाम से स्थापित पुरस्कार से आज आधुनिक युग के ऋषि डॉक्टर अनिल काकोडकर जी को सम्मानित किया जा रहा है. मैं उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं. Dr. Anil Kakodkar is an Indian nuclear physicist and mechanical engineer. He obtained a master's degree in experimental stress analysis from the University of Nottingham. Dr. Kakodkar was the chairman of the Atomic Energy Commission of India and the secretary to the Government of India. He was the director of BARC from 1996 to 2000. Dr. Kakodkar has been a key contributor to India's strategic program. We remember the first successful peaceful nuclear explosion experiment in 1974 at Pokhran. Dr. Kakodkar was amongst the chosen few involved in it. At present, he devotes his time on issues related to energy, education, and societal development. He is propagating the concept of SEALAGE, a knowledge-based ecosystem for bridging city and village gaps for technology-enabled sustainable development in rural areas.
For his contribution to Indian nuclear program, he was awarded Padma Shri in 1998, Padma Bhushan in 1999, and Padma Vibhushan in 2009. And he also got G Files Award. Dr. Kakodkar is also a recipient of highest state awards, and not only from one state, from 3 states. One from Madhya Pradesh, Maharashtra Bhushan in 2011 from Maharashtra, and Gomanta Vibhushan in 2010 from Goa. Besides this, he has several national and international awards and honors. And today, Dr. Kakodkar will be felicitated with Acharya Kanad Puraskar, who has written Vaisheshika Sutra, and in which it is one of the most important texts in history of science. And today, the Puraskar in his name is offered to Padma Vibhushan, Dr. Anil Kakodkar. I request Dr. Kakodkar to please come forward and accept the honor, and I request Sri Jitendranath Maharaj to give away this Puraskar to Dr. Kakodkar. सर, तुमका हो पुरस्कार मेळ्ळा याची समस्त गोंयकारातर्फे तुमका परबी. आता तुमका विनंती करता की तुम्ही या सोहळ्याच्या निमित्तान आमका 2 शब्द सांगचे. जरूर, पण कोकणीच्या ऐवजी इंग्रजीत बोलतो. हो, कोकणीत बोलणं म्हणजे माझी परीक्षा होईल. सन्माननीय व्यासपीठ, सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर, बंधू भगिनींनो, let me at the outset express gratitude for this great honor that the Hindu Research Foundation has done to me by way of this very distinguished Acharya Kanad Award. I have been, we have talking about it continuity from the period of these great rishis in whose name we are all getting decorated, and we're talking about modern science going forward. It's a great continuity. In between there have been some breaks, some gaps. So I thought by way of this acceptance speech, let me express a few points in that regard. The first one is, I think it is these great people, when they discovered various things for which they are known and for which we feel so proud, I think we should recognize that they did that ahead of anybody else. The world didn't know, but these people did it. And any one of the 7 rishis on whose name we have these awards, and many others. Today, if you are looking for countries which are leading countries, advanced countries, they are there because they do things, particularly in science and technology, which nobody else has done till that point of time. That's what brings the Nobel Prize, that's what brings the new researchers. And I think this distinction we should recognize, and I feel very humbled
that are we really qualified to receive these awards in the name of these rishis? At least I feel I'm of course very proud of whatever I could do, whatever I could contribute. But if I ask a question to myself, that have I done something which nobody had done before, like the great rishis have done, I think I had to answer in the negative. And that's the big difference. And we should kind of recognize how we should take the country forward. If you want to take country forward, we must bring in new technologies, new researches, which nobody has done before, as I said. And now, what are the new areas? Of course, we are all talking about artificial intelligence, machine learning. As Dr. Bhatkar says, there is a big fear that, see, so far we had the technologies, and whether the technology would be used for good or for the evil purposes would depend on human mind. So we did expect that as long as the humanity or human values survive, mankind will always make use of technology for good purposes, or otherwise there will be some other evolved human minds which will bring things under control if they go out. Now we are talking about artificial intelligence. So now if you have technologies which evolve themselves not by human mind but by artificial mind, and you already see some of these blogs, at this moment they are essentially blogs, but they are talking about that, look, as Dr. Bhatkar says, that it has the power of destroying the humanity itself. Now at that time, who will control that? An evil mind, evil human mind can be controlled by a bias, a benign human mind. An evil artificial intelligence, you probably have to generate a benign artificial intelligence to control. So, and things are happening way faster today than they were happening in past. So there is a challenge. Talking more generally, I think governance anywhere, the way things are evolving, are we able to evolve governance systems to manage things at the speed at which the new things are coming forward? And you will notice that there is a challenge. How are we going to deal with this challenge unless these issues are addressed and addressed promptly? So the point is, we need to bridge this gap of the advancement in technologies which is taking place and the advancement in technologies which we are doing in our country. And if you ask a question whether that gap is getting close or widening, I will leave the answer for you to figure out. I am at least worried about this. The second part is with respect to the what one may call that we have our own society to serve. If you have the best of technology, and if that best of technology gives a lot of power in the hands of a few, it may be few nations, it may be few people, that's an invitation to disparity. And that's what we are seeing. Now, if you want to eliminate that disparity, then you need to bridge this disconnect. And you want to bridge this disconnect, then translation of research, technology, and the societal benefit has to be a continuum.
And if you want to do that, again we need to mend our ways to be able to do that effectively. So I think there are lots of cultural issues that need to be addressed in sorting out both these distinct scenarios. One of going forward in a manner that we bridge the gap between us and the best of the world, and another where we make sure that taking new science, or for that matter existing science, for the benefit of our own people as a continuum. One, we need to eliminate, dissolve silos across disciplines. And for the second, we need to dissolve silos across people of different kind. I can't say I'm a researcher, I can't say I'm a technologist, I can't say I'm an entrepreneur, I can't say I do business, I can't say I do social service. These are all silos, I think, and you can't be looking at them in isolation. It has to be a continuum, and that is what we need to be concerned about, and we need to be doing something about. People in past, they understood the principle of self-similarity. Acharya Kanat could figure out that the power of, you divide things, make it smaller and smaller. But just because it's becoming smaller doesn't mean that it becomes less power. In fact, its power is higher. The power of atom is far more than power of electrons, which is chemical energy. And power of subatomic particles is even more compared to power of atom, which we are yet to see. Maybe we'll see it at some day. Now, you could notice, or rather our ancestors had noticed, that there is something similar between this and what we observe in the sky, what we observe in the universe. And a friend of mine, he actually studied this and figured out that even our temples, design of Hindu temples, are based on this principle of self-similarity. It is the same thing with which the leaves for a particular tree go and they appear similar. Or for that matter, there are a lot of principles of self-similarity between different leaves. The beach marks which you see on the sea coast, and a number of natural phenomena. So in fact, they made the architectural principles for design of temples, which are based on self-similarity, so that when we go and worship the Almighty, we recognize this power of life, that is self-similarity. And that's what, to my mind, our ancient Rishiminis had recognized. Now, I think we need to, when we mix up, and I'll just give you one example and stop. This is not the time to make a long speech. Take case of the modern medicine and traditional medicine, and we know, and there is a big effort, but we are trying to unify them. And I have been looking at this from the practical perspective, and I find that unifying them is actually futile. What we need to recognize is that there are two streams. We need to do research to figure out that the traditional medicine, why it works. When we say standardize a modern medicine, we are talking about some standardization by way of compositional characterization, by way of
for example, structural characterization and so on and so forth. It doesn't work when it comes to Ayurvedic medicine. We know that the processing has a very important role in Ayurvedic medicine. When you administer medicine, the understanding of human health is based on a completely different principle in Ayurvedic medicine as compared to modern medicine. So why are we trying to combine the two? I think we must do more research to figure out how that Vata, Pitta, Kapha, and then from there we get this medicine. How does that work? And I think once we understand the traditional knowledge, maybe in medicine, maybe in any other subject, we can derive the benefit, we can make it more popular. Wherever possible, we can combine, or at least to convince public. For example, you talk about medicine, let's do clinical trials, which have a common principle. But I think mixing up, I have some difficulties. We must understand our ancient past. We must understand the great wisdom. We must understand the great wisdom our people displayed way ahead of others. And I think it's important that as we try to bridge the gap between where we are today and the best in the world, we must also connect all our activities across different segments so that we derive the benefit to a maximum and not get into this confused situation. So I want to thank Hindu Research Foundation for trying to figure out what is it that our people knew. And I think we must really take that research to great depth to figure out how our people generated so much of wisdom, so much of knowledge without the modern labs. Today we do all this with very expensive labs and all. And many people in past, particularly in things like mathematics, astronomy, where the power of observation, power of imagination really made a huge difference. Why can't we have the same power of observation and imagination today? And that is what we need to, that is what to my mind the tapascharya would mean. And I really want to thank Hindu Research Foundation to at least seriously think about how we should pursue this research forward. Once again, thank you very much for this very distinctive honor. I am grateful. Thank you. Thank you, sir, for giving different angle and different perception of our ancient past. Dev bare karu. Now it's a time to felicitate two senior most scientists. First, we will have Padma Vibhushan Dr. Krishna Swami Kasturi Rangan with Acharya Bharadwaj Puraskar. I request for display. मैं आचार्य भारद्वाज, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा कालखंड आज से 2600 वर्ष पूर्व का है। मेरे द्वारा अभियांत्रिकी, विज्ञान और आयुर्वेद के विषय पर गंभीर चिंतन, अभ्यास, परिश्रम और प्रयोग के पश्चात इन विषयों पर कुछ ग्रंथ अंकित किए गए हैं। विशेषकर यंत्र सर्वस्व ग्रंथ में आकाश, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में संचार एवं आवागमन करने वाले अनेक विशेषता युक्त यंत्रों का निर्माण तथा उनके संचालन का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसे वैमानिक शास्त्र से संबोधित किया गया है। हमारे समय का ज्ञान ग्रंथ अति प्राचीन और संस्कृत भाषा में होने के कारण समाज और विशेष रूप से वैज्ञानिकों द्वारा दुर्लक्षित हुआ है और समयानुसार मेरे पीढ़ी द्वारा किया गया महत्वपूर्ण ज्ञान एवं अन्वेषण लगभग लुप्त होने के तट पर है। मेरे पीढ़ी का सौभाग्य है कि आधुनिक युग में हमारे तपश्चर्या को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।
आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी प्राप्त और विश्वविख्यात गणमान्य आचार्य श्री कस्तूरी रंगन जी को मेरे नाम से स्थापित आचार्य भारद्वाज पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह मेरे द्वारा किए गए प्रयासों को श्रेष्ठ अभिवादन है, ऐसे मैं मानता हूं और उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यशस्वी भव, कल्याणमस्तु। Dr. Krishnaswamy Kasturi Rangan is one of the India's foremost space scientists and has played a key role in the success of country's space program. He has headed the Indian Space Research Organization, ISRO. He was the chairman of Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Chancellor, Central University of Rajasthan, Emeritus Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru. He is a member of several national and international science academies. Dr. Kasturi Rangan is the only Indian to be conferred honorary membership of the International Academy of Astronautics and also has served its vice president earlier. In addition, he was awarded the famous Shanti Swarup Bhatnagar Award in Engineering. He has been conferred with highest civilian honors Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. He was also awarded as Officer of the Légion d'Honneur by the President of France, the Award of Merit. And now, almost every teacher once in a day is remembering him because of the National Education Policy 2020, because he played a major role in it. कई राज्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लग रही है, कई में ऑलरेडी लग गई, कई में लगने वाली है, कई पे बहस चल रही है, कई पे डिबेट चल रही है, कहीं पे बीओएस की मीटिंग्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स आदि सब कंडक्ट हो रहे हैं और इन सब में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का जिक्र हमेशा होता ही है। आज टुडे ही इज फेलिसिटेटेड विथ आचार्य भारद्वाज पुरस्कार, who is the pioneer of aviation technology. I humbly request Dr. Kasturi Rangan to accept this honor, and I request again Swami Jitendra Nath Maharaj to kindly do this honor. Thank you. We are pleased to have you here, sir. Please share your thoughts with us. I don't know what to say on this very august and memorable occasion. There are many events in my life when you go through various kinds of things, and there may be sometimes a recognition here and there that happens to you. But something different strikes me today when I'm here with all of you on this very interesting, very thoughtful, very innovative and most important, divine way of looking at things by conferring an award which is behind one of the most respected and revered sage Bharadwaj. I don't know, I'm really awestruck with the kind of awards name that it carries. You may have a Padma Shri, you may have a Padma Bhushan, Padma Vibhushan, but this is awesome. It's very difficult to see. How do you do this? Why do I say this? I was just trying to look at, years back about Bharadwaj in a different context. When you do this education policy, you want to really look at what you call as a perpetuation. How do you try to make it continuous?
How do you respond to the dynamic changes that knowledge society witnesses and so on and so forth? So you look at not only what is going to be done here, what is going to be the future, but in India's case, we can look with pride at the past too. We have a very rich heritage, very rich legacy. In this connection, I looked at Bharadwaj. Sage Bharadwaj, of course, he's aeronautics, mechanical engineering, all kinds of genius things that he did. But one thing that struck me was he had an unquenchable thirst for knowledge. And he was never satisfied with what he knew. He wanted to know more. He wanted to know more. And as he learned more, he asked more questions to himself, and then he had to answer them. So he was really finding, how am I going to learn everything about this universe, about this world? So he went to Brahma. And he asked Brahma, look, I have been working on this. I am trying to understand everything that is around me, everything about this universe, about the scheme of things. But I feel that I don't seem to have understood everything. Can you do me something by which I can learn the whole universe and what is all knowledge represents? So Brahmaji showed him 3 mountains. And those 3 huge mountains they were. And he put his divine hand and took out from one of the mountains this much of sand. And he dropped it like this. See, in your life, this is all you can learn out of those. Then there are 3 mountains of knowledge. And this is all you can learn. So he was very disappointed. What do I do? This kind of a knowledge, and this is the level to which I can learn. So how can you bless me so that I can still have a look at how I can master those 3 mountains of knowledge? And then he asked Brahma, whether can I be born in all the yugas, the 4 yugas, and see whether I can learn during that period of yugas, you know the number of years in a yuga, and whether in a whole cycle, and then go, of course, you know, Bharat is very, very rich in the kind of definition of schemes and times and so on. Then yugas, you know the 4 yugas, then Mahayugas, then Brahma's day, Brahma's night, and the whole kind of thing is there. There is a time scale for this. Of course, others, just to give a little different thing on this, these yuga calculations, if you try to do, sometimes I did a back of the envelope calculation, what does this yuga represent? And I found that if you put this Brahma's day and Brahma's night and make it into one cycle, that cycle comes to about 15 to 16 billion years, as per the number of years in each of the Bhagavad. And the best of the cosmic radiation explorer of the US says that universe is 13.6 billion years. Can you imagine the kind of thought that these ancient Indians had, that they could say something about the length of the universe to be something like 13, 14 billion. Just look at the kind of numbers, very close. But where would they got this kind of a thing? And how did they segment it in terms of times? Something remarkable. So, but then Brahma gave him the boon. So you will see Bharadwaj's name in Ramayana, you see Bharadwaj's name in Mahabharata, and I am sure today his spirit is pervading here also. That is a kind of a thing. So, why did I have to put this long story about Bharadwaj? Once you are giving me this, so I know, when I said it's awesome, I can't believe that I can carry that kind of a burden. Even in the context of trying to understand that part of the thing that Brahma took and showed what is the present knowledge possibility for you. But the important thing is, when we went to the national education policy, and we wanted to give a policy which will make sure that all the future generation, the present generation, and of course the older generation who are still want to do something in life, they have to be all catered to. So our whole scheme of creating this policy was the one where, notwithstanding the age, of course you have the schooling education, you have got the higher education, you have the research education, you have got the vocal education, you have the professional education, all that kinds of things are there. But most importantly, that depending on your interest, your inclination, and your ambition, you should be able to pick up that part of the education which will make a success for you.
So the whole educational system that we have configured, which is the national education policy, is the one in which there is a relevance for everybody at any time, at every point, on everything. So that is the point. Some sense the kind of things that Bharadwaj was all the time thinking, not that we have replaced his thought by means of a simplistic solution called the national education policy, but most important is that we have addressed it in a way in which it will cater to. We went through a fairly long process because you know this particular policy has come 35 years after the previous one. A lot of things have changed, whether it's social, whether it's economical, whether it's political, whether it's cultural, and many other kinds of things. So obviously education has to be in line with this. So we had to work on those kind of a thing. We did that. We did over 2 years. Even we had our predecessors who went into this particular national policy. There was this, Smriti Iraniji's work. Then it has been Javadekkar's work. Then again, mostly the present minister, Dharmendra Pradhan's work. And of course, overseen and originally conceived as a necessity for this country by Sri Modi ji himself. So that is the kind of a thing. We have to meet up the challenge, and the minister told us that we have to have this, at least we'll be able to keep the test of time for about 20 years or 25 years. So we have to keep that part of it. And as Anil said, that we have to have a fast-changing world in which the computers are changing, the kind of artificial intelligence, expert systems, machine intelligence, all of them have their say in trying to make dynamically change the knowledge spectrum of the society. So with all these things, we have to make sure that there is a relevance for this particular policy and the kind of framework that it will give for the education, which is applicable for 20 to 30 years. So we did this exercise. The country had to be consulted. We went through several processes of consultation, not only education, is stakeholders, parents, students, teachers, industrial systems, religious sects, and many other kinds of ideologies. Everybody we consulted. The outcome is the report that we have submitted. It has found a currency across the spectrum. I'm not trying to sell this policy, but I want to say the process we adopted to make sure that it becomes applicable and acceptable. And finally, when we put it in the public domain, we got something like 200,000 responses. 85% of the responses were in favor of this policy. So you can see the amount of effort that has gone and the type of appreciation that has gone into it, and the critical assessments that have been made, and the kind of solution we have propounded for this. So this is the path, and I think in a sense, this particular effort and the curricular framework that we have now formulated recently for the school education, and I am sure the higher education is finding its own pace of development for implementing this policy, I am sure India will have a fairly vibrant, dynamic knowledge society for meeting the challenges of the 21st century. Coming from space and having spent nearly all my life in space, I cannot completely overlook not saying about it because the education overrides all other things at the current juncture. Space has grown out of the vision of Sarabhai. Today we have reached the level where we are in the planetary exploration. We went through rocket developments, satellite developments, application one of the foremost in the world, and currently we are in the development of heavy launchers. We are trying to develop a human space station, and also we have now landed on Moon, and we are in the process of trying to look at how to land on the Mars, and then to have a planetary exploration program for the 21st century as a part of both national as well as international collaboration. So this is the whole scheme, and this is, what is interesting is, it does need tremendous amount of interdisciplinarity. It needs tremendous amount of cross-linkages and interfaces between areas of technology, science, social sciences, and so on. So when I look at the 7 rishis, the thought, as Anil said, has gone into them at that particular point. One thing I found was they were all multidisciplinary people, the rishis. They could think of subjects, whether it is algebra and some solutions of quadratic equations, concept of a zero, the concept of a heliocentric world. All this, they had to understand the totality of the systemic knowledge. And that is precisely that has been brought to bear into the space in trying to make it into a successful venture.
And I am sure that we have much to learn because of these kind of similarities in the way of thinking, the way of systematizing the knowledge, and the way in which this can be adopted. We need to have work not only with the present areas, the present research, but also our past legacy and past heritage. I am so happy to see that this Hindu Research Foundation, which Sri Balji yesterday explained to me, the objective and the kind of direction he are taking, certainly is a very important. It's not an academic activity alone. It has implications with respect to even looking at the future. There may be things. Remember, we talk of universe, and when we talk of universe, we are talking of 4% of the samples of matter. We still don't know what those 96% of the universe is, whether it is in matter and the radius, the dark energy and the matter that we talk about. So we are still very much in the dark. To assume that our ancients thought in a certain way and we are thinking in a different way, it is not true. Now we are finding that we are trying to converse more and more on the thoughts of ancients with respect to the modern knowledge and the systematizing of the modern knowledge. I conclude this by giving you a most simple example. When we wanted to say that we need to have a liberal education at the undergraduate level, and we need to bring in multidisciplinarity as the key element to this, we went back to the work of Acharya Banabhatta in 14th century, and he had written that Kadambari. And Kadambari says that a person who masters 62 kalas, and this includes all kinds of things which are all practiced by these rishis, then only you become a total man. So that is the heritage that we have got, and that is the one that we are making use of. And we see this relevance not only for this country, it's all across when we talk of Ivy schools in US, it's all simply because they adopt educational system which is integrated, multidisciplinary, and the right to cut across the interfaces between various areas. And that is going to be the future to make ourselves relevant all the time for all the kinds of work and all types of intellectual and academic activity, and ultimately leading to the development of the humanity. So with these few words, I say there is tremendous connections that are possible between the past and the present. And it promises even greater things for the future. We can develop these concepts. And I am sure that the Hindu Research Foundation will have much to do in the years to come. Because the more we develop in the science area or in the technology area or in the other areas, I am sure the more we will have to also look back and see the consistency with some of the brilliant ideas that the ancient rishis has given us and bequeathed us. I am very, very thankful to all of you for this Hindu Research Foundation and all those who are concerned with it for this very unique privilege that you extended to me to be with all of you and share my own thoughts. Thank you very much. Thank you, sir. My God, what a tremendous energy. तरुणांना सुद्धा लाजवेल असा उत्साह आहे त्यांच्या वागण्यात बोलण्यात. No wonder, sir, you made all the teachers busy with this blue taxonomy, major, minor, MC paper, input, output, outcome of syllabi, etc. And coming towards the last felicitation, we have our beloved and again another young and energetic Dr. Sridharanji. We are felicitating him today with Vishwakarma Puraskar. I request to display. अभिवादन। मैं विश्वकर्मा, इस विश्व का प्रथम यांत्रिकी और वास्तुकार। मेरा और मेरे कौशल्य का संचार एवं उल्लेख चारों युगों पाया जाता है। प्राचीन काल में देवताओं के वास्तु और अस्त्र शस्त्र अण्वस्त्र आदि का मैं निर्माता हूँ। विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र भी निर्माण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सतयुग में इंद्रपुरी, त्रेता में लंका, द्वापर में इंद्रप्रस्थ व द्वारिका एवं हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी आदि का निर्माण मेरे ही द्वारा हुआ है। इसी कारण मुझे देवशिल्पी भी कहा जाता है। आज आधुनिक युग के विश्वकर्मा डॉक्टर श्री श्रीधरन जी ने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के निर्माण का कार्य बेहद कुशलता और श्रेष्ठता के साथ पूरा कर दिखाया है। यह कार्य देश और समाज के लिए श्रेष्ठतम उपलब्धि है।
मैं अत्यंत हर्षित हूं कि डॉक्टर श्रीधरन जी की योजनाबद्ध कार्य प्रणाली की वजह से उनके क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत मूल्यवान है। इस हेतु उन्हें मेरे नाम से विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उनके दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से शुभकामनाएं। Dr. Sridharan ji. He is an Indian engineer and politician from the state of Kerala. He is credited with change of face of public transport in India with his leadership in building the Konkan Railway and Delhi Metro, while he served as the managing director of Delhi Metro Rail Corporation in 1995 till 2012. He was given the sobriquet of Metroman by the media for his grand success in executing the completion of Delhi Metro. He was awarded Padma Shri by Government of India in 2001 and Padma Vibhushan in 2008. He is a recipient of the prestigious Chevalier de Légion d'Honneur Award by Government of France, which is the highest order of merit in France, and was named one of the Asia's heroes by Time magazine in 2003. Dr. Sridharan ji was appointed by the former UN Secretary General Ban Ki-moon to serve on the United Nations High-Level Advisory Group on Sustainable Transport for a period of 3 years in 2015. He is also a member of Mata Vaishno Devi Shrine Board. He received an Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star in 2013 and G Files Award in 2013. Besides this, he is recipient of several honorary doctorates, and today he will be felicitated by Acharya Vishwakarma Puraskar, who is the universe divine architect. Yeah, 1 minute. I'm not calling till now. Before we call Dr. Sridharan ji for the honor, let me try to recite one shloka in Malayalam especially for him. It says, Allengil amdyum varayum karmam chedinya sanganai irikyuga idalyavilyunamum naranu chedidan. It's a translation of second stanza of Isha Vakyasa Upanishad and is done by great saint of 19th century from Kerala, Sri Narayanan Gurudev. The meaning is, what is there for a man or a human being except to engage himself till the end of his life in karma. So continuous karma is the duty of life, and in case of Sridharan ji, it is very apt, most meaningful and most suitable. Please give him a round of applause. Now I call upon Swami Jagannath Maharaj and Jitendranath Maharaj, and I also request Professor Penna and Sri Ahir to kindly join with him to do the honor of Dr. Sridharan ji. आम्ही आता सत्कार करत आहोत फक्त 91 वर्षाच्या तरुणाचा.
Congratulations, sir. We are honored to welcome you here to brief us on this occasion. I wish all of you well. This is a very great and proud moment for me to receive the Vishwakarma Award from the Hindu Research Foundation, and particularly through the hands of Swamiji. I must thank Dr. Pal and the directors of the Hindu Research Center for selecting me for this very prestigious award. It is indeed a great honor and recognition. I must also compliment Dr. Bal on this occasion for starting such a unique foundation to bring back our old knowledge of science, mathematics, and all other subjects to the new present generation. And along with this knowledge, we also get the age-old values and principles of our nation. He has named these awards after Saptarshis, the 7 sages. By so doing, he has really achieved what the foundation stands for. The values, the knowledge, and the findings of these sages have been brought to the present day generation straight away, creating curiosity and a thirst for knowledge to find out how these sages acquired this sort of knowledge. I'm not going to speak about Vishwakarma or any of the stages for the time being. I only want to tell you that I've been able to achieve very many important infrastructure projects completed on time and within the estimate. And this achievement, such as Konkan Railway, Delhi Metro, many other metros, and many other infrastructure projects as well. But I want to place before you what I have achieved in completing these projects is not an achievement of one individual. In all these projects, there has been a team. Team consists of designers, engineers, contractors, suppliers, and this is a collective contribution from all these people that I've been able to complete these projects the way I have done. Therefore, today's award I am receiving on behalf of these people who had helped me to complete this project
in such a magnificent fashion. But at the same time, I would like to share with you what enabled me to complete such projects, difficult projects not seen in the country earlier, so remarkably well. This is mainly due to the organization I had set up for completing this project and the unique work culture I was able to bring to these organizations. I will not go into very much detail about this work culture because it will take a lot of time. Already it is past 2. But the cardinal principles of this work culture are only few. Most important is integrity in every individual who has been working with me for this project. Punctuality, most important. Then technical competence, what we are doing, we should know very well. Instill this knowledge in them in time. And most important, the feeling that we are not working only for our salaries. We are working for the nation, for the society. And to instill this value, what I did was, incidentally, I'm an ardent student of Bhagavad Gita. Every officer who joined me for this, in these organizations, first thing I did was supply him a copy of Bhagavad Gita. And not only just supply, but encourage them to read, understand, imbibe the values contained in this Bhagavad Gita, and put them into practice. In putting into practice 2 important areas I always used to emphasize. One is Nishkama Karma. Do your work without expecting any fruit thereof. You are not expecting any particular advantage for yourself. And then perform your duties as an offering to God. And since we are not able to see God straight away, I used to tell them that offer it as arpana to the society. With that feeling only, you should take up your work and do it. And one particular slogan which I used to emphasize while engaging with these officers and staff was, Yat karoshi, yat asnasi, yat juhoshi, dadasi yat, yat tapasasi kaunteya, tat kurusha madarpanam. The short meaning of this is, whatever you do, whatever you even eat, what oblations you do, what dhanas you do, or what austerity you undergo, do all these things as arpanam to the Almighty. If with that attitude, if you work, then you are not bothered about the outcome, what happens. And you are always, I've seen that, crowned with success in whatever venture you take up. These values I was able to instill in them, and that is how
organization like Konkan Railway, while now looking back, I find such a huge railway project, 760 kilometers long, with 93 tunnels, measuring to about 82.5 kilometers of tunneling. So many bridges. How we were able to do it just 7 years' time. Similarly, Delhi Metro, a modern metro, world-class modern metro was not known to this country at all. How we are able to get the technology, transplant the technology to the country, and execute the project and do it before time. Most of the targets were before we were able to achieve. All this was possible only because, as I mentioned, the values, what the ethics, and what culture that we have brought about in these organizations. My listeners, what I want to place before you is, if you have these good principles in your work, if you employ these good work principles, victory is always there. Krishna told Arjuna, Nahi kalyana kachit durgadim tada gachadi. A person who does good deeds will not face any adversities in life. And that has been my experience. I've been, for the last 68 years in my professional life, I've come across very many people. I've learned quite a lot from them. But I've been able to generate a large body of people with these values and with this mission, who are now today managing many metros in the country. The success of Delhi Metro led to a metro revolution itself in the country. That's why about 22 cities in the country now metros are coming up, including in Nagpur. And most of the metros, I had the privilege and opportunity to get involved in the planning, starting, setting up the organization, and guiding them initially. Therefore, on this occasion, I wish to particularly thank Dr. Bal, the directors of the Hindu Research Foundation, for the opportunity given to me to be with you and share particularly my philosophy in carrying out the project. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable words. पुरस्कार वितरण सोहळा इथे संपन्न झालेला आहे. ही सगळी उत्तुंग व्यक्तिमत्व जी आपण आपल्या समोर मंचावर बघत आहोत, ते स्वतःच एक एक जण आपल्यामध्ये एक संस्था, एक विद्यापीठ आहेत. त्यांचे विचार, त्यांचं कार्य आपल्या तरुण पिढीला नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल, स्फूर्तिदायक ठरेल, मार्गदर्शक ठरेल, याबद्दल हिंदू रिसर्च फाउंडेशनला अजिबात शंका नाही. यानंतर आपण या सगळ्यांच्या पुरस्काराच्या वेळी ज्या ऋषींचा पुनर्जन्म झालेला बघितला, त्या ऋषींबद्दल थोडं सांगण्यासाठी मी डॉक्टर भाल यांना विनंती करते. थोडं व्यवधान तुमच्या कार्यक्रमामध्ये. ऋषींबद्दल मी सांगणार नाही, पण ह्या ऋषीला परत जिवंत करणारे जे दोन तरुण 9 वर्षाचे या ठिकाणी आहेत, अनय आणि अबीर. ते 9 वर्षाचे, दे आर 9 year old. At a very young age, they are TED speaker and have several awards and records. Anay and Abir founded 2 startups at the age of 8, and one is for the profit venture
and second one is for universal artificial intelligence, which leverages artificial intelligence. The great Saptarishis that you have seen today have been created by their application, Universal AI, which is working on cutting edge of AI. And they are also invited in California recently and got $1 million from the investors from California. They have not only created this artificial intelligence, but they have donated out of their profit and earning 1,000 rupees to this program this year. I call them on the stage, this 9-year-old scientist. They are future. Yeah. They are yester generations, Aryabhattas, and present generation of Bhatkars, and future generation Anay and Abir. I now call upon the guests to give them, celebrate them with dupatta and bouquets. Give them a mic. Anay and Abir, 9-year-old scientist. Very good. My name is Abir Ramakrishnan, and here is my twin brother and co-founder, Anay Ramakrishnan. They are twin brothers. We don't know who landed first. Namaskar and pranam to the divinity in each one of you present here. We are so very honored to be here in the galaxy of iconic scientists, inventors and thinkers who have brought glory and fame to our Bharatvarsh. We bow with utmost humility to the divinity in each of you. We have built Inverse AI with a sole mission to immortalize humans. It started when we lost our grandfather, who was a doctor, succumbed to COVID. We thought, how can we immortalize him? Whenever we miss him. Our light bulb moment was when generative AI and other various AI models came, which can convert text to text, text to voice, text to video, and many more. Our app Inverse AI generates iconic legends with whom we can talk and interact with. Our app is available in Play Store and App Store. And our web version, which is beta.inverse.ai, is also ready. We seek your blessings with folded hands. Dhanyavad. जननी जने तो ऐसे जने हो दाता या शूर, वरना
वो बांध रहे काये गवाये नूर, आपल्या असा एक श्लोक आहे. धन्यवाद त्यांचे माते पिता की अशा टॅलेंट्सला त्यांनी जन्म दिला. रामकृष्णन आणि प्रीती. थँक्यू. सर, बिफोर द गेस्ट स्पीक, प्रेस वांटेड ऑल द अवॉर्डीज फोटोज टू सप्तऋषींचा फोटो पाहिजे. किती उभं राहावं लागलं सर? इथे उभं ज्याप्रमाणे आपण सगळे भारावून गेलो आहोत, त्यांना पत्रकारही अपवाद नाहीये. त्या सगळ्यांना त्या सप्तर्षींचा एक ग्रुप फोटो हवाय. त्यामुळे आपण कार्यक्रमात आधीमध्ये हा एक ग्रुप फोटो काढूया. धन्यवाद. सगळ्या सप्तर्षींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं अभिनंदन करूया. आणि कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागाकडे वळूया. कार्यक्रम में इसके बाद विशेष अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी अपने विचार प्रकट करेंगे. Madhusudan Penna ji has worked as officiating VC of Kavi Kuluguru Kalidas Sanskrit University. In his academic career, he was meritorious student and throughout gold medalist. He has so many awards at national and international levels. He has Sahitya Academy Award, Honorary Delete Vachaspati, Shastra Ratnakar, and he is the recipient of Madhu Bharati. इदानीम अहम आमंत्रयामि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यान् आचार्य मधुसूदन पेन्नाजी वर्यान्. मान्याः आचार्याः कृपया अत्र आगत्य एतस्मिन् पावन निमित्ते स्वीय मनोगतपूर्वकम् अस्माकम् उद्बोधनं कुर्वन्तु इति. धन्यवाद. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अधिमंचं विराजमानाः महर्षयः अत्र येषाम् आध्यक्षे अयं कार्यक्रमः आयोज्यते ते अत्र भवन्तः परमादरणीयाः जितेन्द्रनाथ जी महाराज वर्याः तथा इतरे च परमादरणीयाः सम्मान्याः अत्र भवन्तः तथा उपमञ्चं मञ्चस्य पुरतः विराजमानाः भवन्तः सर्वेपि सहृदयाः. भवतां सर्वेषामपि स्वागतं, हार्दम् अभिवन्दनम्.
ज्यादा डरना नहीं। मैडम ने मुझे थोड़ा इग्नाइट किया तो मैंने इतना आपको कहा। आप अगर तैयार है तो 4 बजे तक भी बात कर सकते हैं संस्कृत में। तो आज इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित होना योगा योग मेरा, मगर ये मैं भाग्य समझता हूं कि इतने अत्यंत भव्य कार्यक्रम में परम पूज्य जितेंद्र नाथ जी महाराज के सानिध्य में, और जैसे बताया एक मेरु पर्वत जैसे यहाँ जो ज्ञान मूर्ति है, उन सबके साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य जो मिला है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इन सभी ऋषियों को एक जगह में लाने का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा एक यज्ञ जैसा किया है, ऐसे भाल सर को मेरे तरफ से बहुत बड़ा एक दंड प्रणाम है। और उनको ये क्रेडिट जाता है, पिछले साल भी देखा और ये साल भी देखा, तो हम सबके तरफ से उनको बहुत बड़ा अभिनंदन एक जाना चाहिए। क्योंकि एक जगह में इतने महर्षि आना मुश्किल होता है, मगर सर ने किया तो ये संभव हो पाया। तो मैं इस हिंदू फाउंडेशन, हिंदू रिसर्च फाउंडेशन, इसके जो मुख्य अध्वर्यु है, इनको कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और सच में ये भारतीय परंपरा का एक प्रतीक है, जहां सामने है और जिनके नाम से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, एक एक के बारे में अगर हम थोड़ा भी जानते हैं तो रोमांच हो जाता है कि इसमें जैसे एक सुश्रुत पुरस्कार, वाल्मीकि पुरस्कार, भरद्वाज पुरस्कार और कणाद पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार, एक का नाम काफी है हमारा जीवन सार्थक करने के लिए। क्योंकि ये सब ऋषि, ऐसा जो नाम दिया गया है संस्कृत में, ऋषि ये शब्द ऋष दर्शने ऐसे एक धातु से आता है, अर्थात जिसकी दृष्टि दर्शन बना है तो वो ऋषि बनता है। अगर ये दृष्टि नहीं है तो हमारा जीवन एक साधारण पशुतुल्य जीवन बन जाता है। ये इसीलिए मुझे लगता है ज्ञानेश्वरी माऊली ने ज्ञानेश्वरी में एक 14वें अध्याय में ऐसा बताया, मोराचा अंगी अशेषे अस्ति पिसे पण एकली दृष्टि नसे। एक बोलते हैं मोर, उसके है बहुत सारे पंख और दृष्टि, डोळस असे, मगर दृष्टि नहीं है, आंख है दृष्टि नहीं। बाकी सभी मनुष्य आंख है मगर अंदर की दृष्टि नहीं रहती है, इसीलिए साधारण जीवन बिताते हैं। और ये जो महर्षि है, ये अपने जैसे साधारण केवल दृष्टि अर्थात आंख नहीं है, दृष्टि का अर्थ होता है ज्ञान, और वो ज्ञान के कारण यहाँ महर्षि के रूप में बैठे हैं। इन सबको अभिवादन करता हूं। जिनका नाम लिया, एक देखिए, अगर सर ने जैसा कहा भरद्वाज महर्षि, भरद्वाज महर्षि का बहुत बड़ा यज्ञ यंत्र सर्वस्व आज नहीं मिल रहा है, मगर उसका एक चैप्टर प्रकरण जो है वैमानिक प्रकरण, वो लेकर अभी जग में एक बवाल मचल गया है कि ये एक इतना अद्भुत एक प्रकरण है। बाकी सभी प्रकरण मिलते हैं तो पता चलता भरद्वाज महर्षि ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। उस एक में 32 सूत्र में उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि विमान 3 प्रकार के हो सकते हैं, उसमें रौमक विमान भी है और सौमक विमान भी है। ये विमानों के प्रकार बताते समय उसमें जो फ्यूल उन्होंने बताया वो मेर्क्यूरी। अभी इस पर रिसर्च होने का है कि मेर्क्यूरी इस प्रकार से कंबस्चन करके लेविटेट कर सकता है क्या, इस पर रिसर्च होने का है। और उन्होंने इंटरप्लैनेटरी विमानों के बारे में भी जिक्र किया है। और एक विचित्र बात उसमें आती है कि पायलट प्यास और भूख नहीं लगना करके पायलट को एक टैबलेट के देने का उल्लेख उसमें मिलता है, और वो कौन सा अभी तक पता नहीं, उस पर भी रिसर्च होने का है। कि 1955 में जब वो पुस्तक प्रकाशित हुआ तो लोगों को लगा कि एक विचित्र आविष्कार हुआ है, फॉरेन में भी इस पर काम अभी भी चल रहा है। ऐसे एक भरद्वाज महर्षि, मगर आर्यभट्ट महर्षि का नाम लेते हैं तो आश्चर्य होता है। तो उन्होंने
उस समय में कहा कि ये भूपिंडः विविध शक्तिभिर्धृतः आकाशे नियतम तिष्ठति, ऐसा एक वाक्य आता है। तो आर्यभट्ट जी कहते हैं ये भूमि पिंड अर्थात एक स्फेरिकल ऐसा एक है, पिंड का गोल का अर्थ होता है गोल, मगर उन्होंने कहा ये एक पिंड आकाश में है, इसको कोई अपने ऊपर धारण करता है ऐसा नहीं, अलग अलग शक्तियों से ये या आकाश में स्पेस में धारण किया गया है। और आज हम बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वन ऑफ द 4 नेचुरल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और एक है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये उसी समय कैसे उनके मन में आया, तो आपको आश्चर्य होगा कि उन महर्षियों ने एक दृष्टि रखे, इसीलिए इतना बड़ा एक विश्व का रहस्य आविष्कार किया। ऐसे आर्यभट्ट, इसीलिए अपने मंजुल भार्गव जी को जब नोबेल प्राइज का इक्वल मेडल पुरस्कार मिला, फील्ड्स मेडल, तब उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि आपके इस काम के पीछे क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे घर में हमारे दादाजी आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य ये हमें पढ़ाते थे, और उसका आज मैं फल भोग रहा हूं कि भास्कराचार्य ये फिबोनाची आज फार्मूला, फिबोनाची प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, और वो भास्कराचार्य ने दिखाया। उतना ही नहीं, उन्होंने इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस, चक्रवाला मेथड दिखाया, और आपको कुट्टक मत भी मिलता है उसमें। तो भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त खास करके जो पाई वैल्यू जिन्होंने बताया, और ब्रह्मगुप्त ने अभी मैंने बताया फिबोनाची जो इटालियन मैथमेटिशियन, तो उनसे भी थोड़ा और शार्प मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताए, और अर्थ सर्कमफेरेंस कितना, तो उसी समय उन्होंने बताए। 2 भास्कराचार्य थे, भास्कराचार्य 1, भास्कराचार्य 2। तो ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वैदिक प्रिंसिपल के आधार पर जब बताया, तब लोगों को वो मैथमेटिकली बताना आया नहीं, और बाद में 15th सेंचुरी में जब न्यूटन ने बताया, तो लोगों ने कहा वाह न्यूटन, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ साइंस करके, मगर ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए था, भास्कराचार्य को। ऐसे एक भास्कराचार्य, एक आर्यभट्ट, एक भरद्वाज, और इनमें कम नहीं है पाणिनि महर्षि, जिन्होंने जैसे रिक ब्रिक्स ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैगजीन में 1983 में बताया कि without studying Panini, whatever the world does in the field of artificial intelligence will be like searching for a wheel which is a millennium year old. ऐसा उन्होंने कहा कि आप पाणिनि को पढ़े बिना क्या करेंगे इस फील्ड में। पाणिनि एक सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट विदाउट ए हार्डवेयर, ऐसा बताया उन्होंने कि उनका आपने पढ़ना चाहिए। अभी तक हम प्रेज करते आए, अप्रिशिएट करते आए, और जैसा कहा जाता है कि क्लासिक्स आर दोज विच एवरीबडी वांट्स टू रीड बट नोबडी रीड्स, ऐसा हम भी कालिदास के बारे में बोलेंगे, हम पाणिनि के बारे में बोलेंगे, भरद्वाज बोलेंगे, आर्यभट्टा बोलेंगे, मगर पढ़ने वाले कितने बोले तो मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण नागपुर में एक 5 या 10 या ज्यादा से ज्यादा एक 20 लोग मिलेंगे जो सीरियसली उसका अध्ययन करते हैं। तो आज भारत देश को अगर इनका नाम प्रतिष्ठित करना है तो पहले उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, और वो अध्ययन अगर पूर्ण होता तो और भी महर्षि यहां बन सकते हैं, ऐसा लगता है। तो इस सिलसिले में जैसे श्रीधरन सर ने कोट किया भगवत गीता से, सर मैं आपके सामने और एक श्लोक याद दिलाना चाहता हूं कि 13वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। सो ये ज्ञेय करके एक रखा, ज्ञेय अर्थात हमें जो अवश्य अपने जीवन में जानना चाहिए, तो ये एक रखा एक्स जैसा। इसको उपनिषदों में यक्ष बोलते हैं कि केनोपनिषद में जैसे एक सामने आया तो किमेतद यक्षम ऐसा पूछते हैं, अर्थात व्हाट इज दिस एक्स, तो XYZ बाद में आया, सो यक्ष कहते थे हमारे। तो वो ज्ञेय एक कुछ तो रखकर उसके तरफ अलग अलग प्रयत्न करके जाने का विधान अपने शास्त्रों में बताया। अब पहले भाषण में जिक्र हुआ और भालसर ने भी बहुत सुंदर उसे प्रस्तुत किया कि ये सारा एक यूनिट के रूप में देखते हैं। एक यूनिट है ये विश्व, और उस यूनिट के अंतर्गत हम अलग अलग
प्लैनेट्स में कुछ और होंगे, हम इस प्लैनेट पे है और हम मनुष्य, प्राणी, कृमि, कीड़ा, सो इस प्रकार से इस माइक्रोब के रूप में इस प्लैनेट को चिपक कर हम है। और ये अगर सूरज से देखा तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, अगर द सेंटर ऑफ गैलेक्सी देखा तो लगभग 24,000 लाइट ईयर दूर में है। इतना एक छोटा मिनिकल ऐसा लगता है ये अर्थ, और इसमें रहकर हम सारे विश्व का रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में हमसे थोड़ा जो आगे गए हैं, ऐसे जो महर्षि अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करके हमारे सामने कुछ और एक्सेलेंट काम रखने का प्रयास किया। ये ज्ञेय के बारे में उदयनाचार्य करके एक 10वें शतक के न्यायाचार्य, न्याय विद्वान एक विषय उपस्थापित करते हैं कि 5th चैप्टर में कार्यायोजन धृत्यादेव पदात् प्रत्ययत श्रुते है वाक्यात संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्यय। वो एक्स के रूप में ही रखते हैं ईश्वर। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरा पर्सनल मैं बताता हूं आप सब एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं कहते हैं। दिस इज रीजनिंग। तो वो कहते हैं ये सब हेतु से मैं ये दिखाता हूं, आप उसी हेतु से उसके तरफ जाओ। तो मानना ही पड़ेगा, बाद में जब हम उसी प्रोसेस में अगर गए तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या दिखाया उसमें? कार्य, आयोजन, धृति। तो ये स्पेस में ये सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो कैसे अपने अपने एक्सिस में है, कैसे वो एक दूसरे से टकराते नहीं, इन सबको होल्ड करने वाली फोर्स कौन सी है, ये अगर आपने सोचा तो कभी ना कभी उस एनर्जी की तरफ आएंगे। उसका नाम हमने ईश्वर ऐसा रखा बोले। तो ये कार्य, आयोजन, धृति। धृति एक बहुत बड़ा कि संपूर्ण गैलेक्सीज को, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स को होल्ड करके रखने वाली एनर्जी। और उसके बारे में कहते समय ब्रह्मसूत्र में भी धृतेश्च महिम्नः अस्यास्मिन् उपलब्धेः साच प्रशासनात् अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, 3 सूत्रों में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि ये सारा कहां है। और वो ईश्वर एनर्जी, और वो ईश्वर कहने से हिंदू बनता, कुछ दूसरा नाम देने से कुछ और बनता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एनर्जी को कोई रिलीजियन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। वो एनर्जी सबके लिए समान रूप से है। हम कैसे उसके तरफ जाते हैं, हम अपने आप को कैसे जोड़ते हैं, ये जोड़ने का विधान योग करके अपने शास्त्र में आया है। तो आज इन सारे महर्षियों में, जैसे कणाद महर्षि का काकोडकसा ने इतना सुंदर बताएगा कि ये कणाद, कण अद, सर ने बताया कि ये पीलवह करके चले गए, शरीर छोड़ दिया। संस्कृत में पीलू इसका अर्थ होता है, नहीं तो आप पूछेंगे ये पीलू पीलू ये क्या है, तो मैं बता रहा हूं ये पीलू का अर्थ होता है परमाणु, एटम, इनडिविजिबल, अनब्रेकेबल। और उन्होंने एक सूत्र में बताया अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेष परिकीर्तितः। तो उन्होंने कहा मैटर को एज यू गो ऑन डिसेक्टिंग और एक्चुअली मेकिंग पार्ट्स ऑफ दैट, यू अराइव एट ए वेरी सटलेस्ट पॉइंट ऑफ दैट, फर्दर यू कैन नॉट डिवाइड द मैटर। वो अल्टीमेट जो पॉइंट है उसको उन्होंने कहा अंत्य द्रव्य वृत्ति ही विशेषः। तो वो अपने आप में परमाणु ऐसा बताया। ये अंत्य द्रव्य वृत्ति विशेष कहने के कारण उनका नाम पड़ा वैशेषिक। वैशेषिक ऐसे एक कणाद महर्षि थे, लाइफ लॉन्ग वो परमाणु को ही मानते थे। जैसे अपना लाप्लास मानते हैं, मैथमेटिक्स जब उन्होंने लिखा तो उनके राजा के तरफ जब प्रस्तुत किया गया तो राजा ने कहा बोले सी यू हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट द गॉड। तो उन्होंने कहा बोले कि आई डोंट फाइंड एनी नीड फॉर सच हाइपोथेसिस। वो ऐसे लोग थे। वैशेषिक भी ईश्वर नहीं मानते हैं, मगर परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एक है। तो सर ने बरोबर कहा कि डाल्टन को, रुदरफोर्ड को और किसी को, उसके पहले हम अगर गए तो किसी ग्रीक फिलोसोफर को हम क्रेडिट देते हैं, मगर हमारे महर्षि कहाँ गए। और उसमें कणाद जी ने वो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते समय 9 क्षण प्रक्रिया, 12 क्षण प्रक्रिया बताए। अर्थात जब एक पर्टिकुलर पदार्थ में जब चेंजेस होते हैं, वो एटॉमिक रिएक्शन के बारे में बताते समय 9 and 12, 9 क्षण 12 क्षण प्रक्रिया बताई। अभी ज्यादा लोग ये नहीं पढ़ते हैं। और ये प्रक्रिया
अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण पीलू पाक, वेदर इट इज टेकिंग प्लेस इन द माइन्यूटेस्ट पार्टिकल और द मॉलिक्यूल. सो ये विचार वैशेषिक दर्शन में हुआ, जिनके नाम से ये कणाद पुरस्कार आज काकोडकर सर को दिया गया. तो ये सारे इतने भव्य महर्षि, इनको याद दिलाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है. ये हर साल सर कर रहे हैं, भाल सर, कि इन एक्चुअली ये भारत देश को एक अलग सुवर्ण युग में ले जाने का जो सेंट्रल लेवल पे मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं अपने लेवल में भाल सर कर रहे हैं, कि ये बहुत बड़ा एक सच में सराहनीय है. क्योंकि ये काम सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, कि ये सारे महर्षियों के नाम से उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए. मगर हम संतुष्ट है कि भाल सर हमारे साथ है, और भाल सर ने पिछले बार, इस बार भारत ने जग के मशहूर ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट को लाकर उनके द्वारा नवीन पीढ़ी को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो पास्ट में, पास्ट हमेशा मैं समझता हूं पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और फ्यूचर भी टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट में से सर एक फ्यूचर के लिए इन पुरस्कारों के द्वारा एक सुवर्ण रास्ता दिखा रहे हैं. और इसके लिए मैं एक बार आपको बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक नमन करता हूं सर. और इन सभी महर्षियों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे. और महर्षियों का ऋण, जैसे वेद में बताया जाता है, जाय मानो वै नरस्त्रिभी ऋणै ऋणवान भवति. तो जन्म से ही हमारे साथ कुछ ऋण आता है. और ऋण मौली कहते हैं ज्ञानेश्वरी में, न फेडोनी मरूनिया म्हणून पाया पड़े मी सोडविले, मिया सोडविले, ऐसा कहते हैं वो, कि अरे इसको न पढ़ते हुए मैं मर जाऊंगा क्या, इसीलिए उसको करना है ऐसा. तो ये ऋण कैसा है कि एक उसमें पितृऋण है माता पिता का, दूसरा इंपॉर्टेंट ऋषि ऋण है. और ये ऋषि ऋण हमारे सामने दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से बाहर आ सकते हैं, ऐसा भाल सर और ये सारे महर्षियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए ज्यादा समय हुआ. नमस्कार, धन्यवाद. एक छोटा सा निवेदन है. कुर्वन्तो विश्व आर्यम, दैट इज अ प्रोवोकेशन एंड प्रोक्लेमेशन बाय आवर वेदास, नीड टू बी फुलफिल्ड बाय समवन समडे. हम एक प्रपोजल रखते हैं, आप वाइस चांसलर है संस्कृत विद्यापीठ के, कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक कनाद या अन्य ऋषियों के नाम से जो भी संशोधन हो, उसके लिए हम स्कॉलरशिप प्रिस्क्राइब करेंगे, और आप उनसे ये करके पेपर पब्लिश कराइएगा. विल स्टैंड बाय इट, वॉट एवर कंडीशंस एंड टर्म्स यू विल गिव अस, विल अबाइड बाय इट. थैंक यू सर. आप लोग सपोर्ट करोगे ना? धन्यवाद प्रोफेसर पेन्ना जी. इसके बाद आज के प्रमुख अतिथि माननीय श्री हंसराज अहीर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे. श्री हंसराज अहीर is an Indian politician and present chairman of the National Commission of OBC. He is a former Union Minister of State for Home Affairs and for Minister of State for Chemicals and Fertilizers. 4 times he was elected as a member of Lok Sabha. मी विनंती करते श्री हंसराज अहीर यांना की त्यांनी इथे आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद. आम्ही सगळेजण या ठिकाणी फार भव्य अशा कार्यक्रमात आहोत याची जाणीव आहे मला. आणि दुसरी जाणीव याची आहे की आपल्याला फार वेळ मी घ्यायचा नाही. हिंदू फाउंडेशन यांनी आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे हिंदी रिसर्च फाउंडेशन. मला वाटतं की एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. फार मोठ्या विचारातून आणि भावनेतून हा कार्यक्रम आयोजन मला आल्यावर कळलं. या ठिकाणी या कार्यक्रमाचे प्रमुख अध्यक्ष सन्माननीय स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज जी, ज्यांना मी पुरस्कृत केलेला आहे, सन्मान केलेला आहे विविध ऋषींच्या नावांनी, असे सन्माननीय सर्व मान्यवर ऋषी तुल्य आणि तपस्वी ज्यांना आपण सगळ्या समक्ष सन्मान दिला, असे सन्मान्य सुरेंद्र श्रीधरनजी, तसेच डॉक्टर के कस्तुरंगनजी,
तसेच डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, डॉक्टर विजय भटकरजी, डॉक्टर गणपती यादवजी, सन्मान्य श्री सुधाकरजी गायधनी आणि डॉक्टर अनमोल सोनवणे, कार्यक्रमाला उपस्थित मधुसन पेन्नाजी, ज्यांच्या आग्रहानं आणि सूचनेवर मी आलो आहे असे डॉक्टर आमचे IPS अधिकारी भालसाहेब आणि सर्व हिंदू रिसर्च फाउंडेशन सर्व सन्मान्य पदाधिकारीगण. मी भाषण द्यावं असं मला वाटत नाही आहे, फक्त मी सन्मानाकरता आलो आहे. मला फार बरं वाटलं की हा जो कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम ही कल्पकता एक फार भयानक आहे. ज्या ठिकाणी सप्त ऋषीच्या नावाने या ठिकाणी जे आपण सन्मान मूर्ती बोलवलेले आहेत, हे सर्व फार मोठे तपस्वी आहेत. त्यांनी आपल्या जीवनभर एकाग्रतेनं एक काम केलेलं आहे. यश सहज मिळालेलं नसतं. सुदैवानं का म्हणा की या ठिकाणी मी सगळे पाहत आहो, या सगळ्यांची दखल सरकारने घेतलेली आहे. पद्मश्री, पद्मविभूषण, पद्मभूषण असे त्यांना सन्मानित करण्यात आलेले आहे. म्हणून ही दखल घेण्यालायक व्यक्तित्व आहेत, ऋषितुल्य आहेत. म्हणून या ठिकाणी भालसाहेबांनी यांना बोलावून, टीमनी बोलावून सन्मान करताना पुढच्या जी पिढीला आहे या पिढीला एक मार्ग दाखवला आहे. आम्ही राजकारणी मंडळी आहोत आणि या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही खूप कमी रुची घेत असतो. हे दुर्दैव आहे आमचं. आम्ही सगळ्यांनी काम केले पाहिजे, हे मला आज मार्ग मिळालेला आहे. मी गायधनी साहेबाशी बोलताना इतका भावूक झालो आहे की असा कार्यक्रम आम्ही कधी आमच्या मनात का आला नाही, कल्पना काय आमच्या मनात आलेली नाही. पण हे खरं आहे की या देशाला आपण जे म्हणतो की विश्वगुरू आणि गुलामगिरीतून बाहेर निघालेल्यानंतर हा देश उभा होत आहे देश. आणि जे ऋषी मुनींनी दिलेले आपल्याला इतकं मोठं विचार आहेत, संशोधन आहे, रिसर्च आहे, मार्ग आहेत, हे कुठेतरी दबलं होतं. दाबण्याचा प्रयत्न केला, परकीयांनी केला, जाळले. मी हे ऐकलं, तुम्ही पण वाचलं असेल की नालंदा युनिव्हर्सिटी जाळली परकीयांनी. 3 महिने ती जळत राहिली. इतकं साहित्य या देशामध्ये ऋषीमुनींनी दिलेलं रिसर्च होतं इतकं मोठं. विचार करू शकतो आपण की आपला देश किती महान देशाचे आपण नागरिक आहोत. अशा महान देशाच्या सुपुत्रांना ठिकाणी बोलवलेलं आहे आणि सन्मान करताना त्यांची जी भाषणं आपण ऐकलेली आहेत, याच्यातून मी सगळं एकच सांगेन की मी पण 4दा लोकसभा खासदार राहिलो आहे, आमदार राहिलो आहे. देशाची श्रीमंती मी पाहिली लोकसभेतून. हा देश नावाचा गरीब आहे, पण आहे श्रीमंत आहे, सर्व दृष्टीनं आहे. मग त्यामध्ये हे विज्ञानी आहे, ज्ञानी आहे आणि संशोधनीय आहे. ही सर्व ठेव जी आहे आपली ऋषीमुनींची आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी या देशाला भगवद्गीता दिली, ज्ञान दिलं, ज्ञानासोबत विज्ञानही दिलेलं आहे. आणि अशा महान जेव्हा श्रीकृष्णांनी म्हटलंय की कणकण में भगवान है, कणकणचा अर्थ मी समजतो की परमाणु ऊर्जा आहे प्रत्येक व्यक्तीची, आणि ऊर्जा आम्हाला दिलेली आहे त्यांनी. म्हणतो आपण कुठेतरी त्याला आपण गमावलं होतं. त्याची कारणं वेगळी असतील, परंतु त्या आता मी बघितलं या ठिकाणी जेव्हा भालसाहेबांनी आयोजन केलेला कार्यक्रम आहे, एक शल्यचिकित्सक डॉक्टर सर्जन पासून सुरुवात केली, अनेक ऋषीमुनीचा उल्लेख करताना विश्वकर्मापर्यंत घेऊन गेलेले आहेत. आता विश्वकर्मापर्यंत घेऊन गेल्या मला असं वाटलं अनेक ऋषींची नावं घेत असताना या सर्वांना राजश्रय पाहिजे आहे. या सर्व कामाला हा राजश्रय दिला, आता मिळालेला आहे मला असं वाटतं. म्हणजे मी याकरता म्हणतो की प्रधानमंत्री मोदीजींनी जेव्हा चंद्रयान-1 जेव्हा सक्सेस झालं नाही, काही कारणानं त्याला यश मिळालं नव्हतं, तर तेव्हा मोठे वैज्ञानिक त्या ठिकाणी अपयश झाल्यानंतर रडकुंडीला आलेले होते. आणि तेव्हा जे प्रधानमंत्री स्वतः त्यांच्यापाशी गेले, ते इस्रोचे वैज्ञानिक आहेत के शिवन, त्यांना जाऊन ते गळा भेट घेतली, त्याने भेटले, त्याला गळ्याला लावलं आणि त्याचे अश्रू पुसले.
मला इथं राजाश्रय दिसला. मला राजाश्रय हाच राजाश्रय असतो की या देशाच्या संशोधन करणाऱ्या या टीमला पूर्णपणे सहकार्य करायची भावना प्रधानमंत्री दिसते या ठिकाणी. हे पहिले घडलं असतं तर वेगळं झालं असतं. आणि या अशा प्रयत्नातून जेव्हा देश उभा होत असताना हे सगळे ऋषीमुनी रिसर्च करतात, संशोधन करतात, त्याची कदर केली पाहिजे. मी अनेक वेळा मेट्रो संबंधी जे विषय आहेत, कोकण रेल्वेच्या बाबतीत श्रीधरनजीच्या गडकरी साहेब किती नाव घ्यायचे, किती हा राजाशाही झालेला आहे. कुणी दखल घेत आहेत आणि ती दखल प्रधानमंत्री घेऊ लागले आता या सरकारच्या काळामध्ये. मी पक्षाचा आहे म्हणून म्हणत नाही. मला वाटतं की हा देश समोर जात असताना जगामध्ये या देशाचं नाव लौकिक होत आहे. आता विचार करा की देशाचे प्रधानमंत्री या सर्व गोष्टींना घेऊन गरिबांसाठी विश्वकर्मा योजना जेव्हा देतात तेव्हा कुठं ना कुठं ते या देशाच्या ऋषी मुनींची दखल घेत आहेत. आणि त्यांनी जे दिलेलं आहे ते स्वीकार करून देश उभा करायचा आहे. एवढंच नाही तर मी एक उदाहरण सांगतो. मी अनेकदा हा विषय लोकसभेत मांडलेला होता. सध्या या ठिकाणी काकोडकर जी आहेत, जेव्हा न्यूक्लिअरचा विषय निघाला होता या देशामध्ये, न्यूक्लिअर डीलचा विषय जेव्हा निघाला तेव्हा एक विषय फार महत्त्वाचा चालला होता. मी चेन्नईमध्ये जात असताना मला तिथे अवॉर्ड मिळाला, सन्मान. तिथल्या काही वैज्ञानिकांनी मला एक विषय दिला होता की देशाचा थोरियमचा विषय होता. थोरियम हा एक विषय इतका प्रचंड आपल्या देशामध्ये स्टॉक त्याचा रिझर्व आहे, समुद्रात आहे. ते समुद्री मिनरल आहे. ते मोनाझाईटमध्ये त्याचं प्रमाण असतं. मला काकोड से मैं क्षमा मांगता हूं कि आपका विषय मैं बोलता हूं. तर त्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात इथे चोरी होत होती, स्मगलिंग होत होती, फार मोठी स्मगलिंग त्या काळात जेव्हा सरकार मोदींचं नव्हतं. त्याला थांबवण्याकरता मी अनेक प्रयत्न केले. ही स्मगलिंग थांबली पाहिजे. कारण थोरियम हे अशी शक्ती मिनरल आहे की युरेनियमपेक्षा 150 पटीपेक्षा जास्त पॉवरफुल आहे असे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हणाले होते. मला कोणी लिहून दिलेला लेख होता. कोणी थांबवलं नाही. मी अनेक मागणी केली, अनेकदा मागणी, याला थांबवा, ही चोरी थांबवा, यांना मायनिंग थांबवा. केलं नाही. परंतु जेव्हा सरकार बदललं आणि 17 मध्ये या सर्व मायनिंगवर बंदी लागली, सगळं थांबलं. आणि विशेष म्हणजे या देशात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये थोरियम चायनामध्ये गेलं. चायनामध्ये गेल्यावर थोरियम आधारित, न्यूक्लिअर बेस आधारित, थोरियम बेस आधारित तिथं 2 मेगावॅटचे पॉवर प्लांट बनले. आणि या भारतामध्ये त्याचं काम चालू होतं. अटलजींच्या काळामध्ये सुरू झालेलं होतं. 5 मध्ये हा देश उभा झाला होता त्यावर काम करण्याकरता. 6 मध्ये न्यूक्लिअर डील झालं आणि पूर्ण प्रोग्राम थांबला. चायनामध्ये भारताचं थोरियम गेलं, तिथं थोरियम बेस पॉवर निर्माण झालं, भारतात निर्माण होऊ शकलं नाही. इथं विषय असा आला, जोपर्यंत राजकीय लोकांच्या मनामध्ये हे येत नाही विषय, तोपर्यंत राजश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत कोणी यशस्वी होऊ शकत नाही. राजकारण हा फार महत्वाचा विषय या ठिकाणी ठरतो आहे. म्हणून या सर्व ऋषी मुनींसारख्या तुल्य तपस्वी लोकांचा सन्मान करताना मला जे जाणीव आहे, देश स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर उभा होत आहे आता. आणि बेस काय, हेच रिसर्च आहे, हेच ऋषीमुनी आहेत. या देशाला खूप मिळालेलं आहे. म्हणून म्हणतं की ज्ञान विज्ञानाची या ठिकाणी भरमसाठ देण असताना आणि सर्व प्रकारचं मिनरल देशामध्ये असताना या देशाला आपण मागं ठेवलं. त्याला कारण अनेक असतील तरी एक कारण आहे की कधी राजकीय नेत्यांनी राजाश्रय मिळाला नाही, हे सगळं मागं पडलं होतं. पण तो भालजींना मी आश्वस्त करतो म्हणजे मी सरकारमधला मनुष्य म्हणून बोलत नाहीये. हे आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. आता हा देश थांबणार नाही. आता एक चंद्रयान 2 जसं यशस्वी झालेलं आहे, आदित्यकडे आपण गेलो ते यशस्वी होत आहे. म्हणून जेव्हा या जगामध्ये एक दहशत निर्माण करणाऱ्या घटना घडल्या इस्रायलमध्ये,
त्यालाही सहकार्य भारताचं मिळालंच पाहिजे, ही भावना पूर्ण युरोपियन कंट्रीची का आहे, जगाची का आहे, की भारत देशा शक्ती घेऊन उभा राहिलेला आहे. शक्तिशाली भारत निर्माण झाल्यामुळं आपण जगाच्या पाठीवर आपली दखल होऊ लागलेली आहे 2014 नंतर. आणि 2014 पासून या सर्व रिसर्चचं कदर होत आहे. आणि अशा या भारत देशाला ऋषीमुनी दिलेलं जे ज्ञान आहे, रिसर्च आहे, संशोधन आहे, त्याचा लाभ घेण्याकरता आपण उभे झालेलो आहोत. मी भाल साहेबाचा आभार मानतोय की आपण खरंच या ठिकाणी खूप मोठं काम केलं आज आणि दिशा दिली आम्ही काय केलं पाहिजे. आणि या अशा चांगल्या भव्य कार्यक्रमात या ठिकाणी जो मंच आहे, हा मंच फारच हेवी आहे, वजनदार मंच आहे. मला वाटत नाही की नागपूरकरांनी इतके चांगले, इतके सप्त ऋषीच्या रूपामध्ये इथे महान व्यक्तित्व उभे बसून आहेत, इतका शक्तिशाली मंच तुम्ही कधी बघितलाच नसेल. आणि त्याकरता नक्कीच हिंदू फाउंडेशनचं मी आभार मानतो. आणि मला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे, अनंतकाळ ऋणी राहील. पण हे कार्य पुढे जाईल ही अपेक्षा करतो. सगळ्यांना शुभेच्छा, धन्यवाद. धन्यवाद. अतिशय समर्पक शब्दात माननीय श्री हंसराज आहिर यांनी आपले विचार इथे व्यक्त केलेले आहेत. अँड नाऊ इट्स टाइम टू लिसन टू द प्रेसिडेंट ऑफ टुडेज फंक्शन, स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज. आचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज विश्वमांगल्य सभेचे सभाचार्य आहेत. 600 वर्षांपासून भारतात चालणाऱ्या तेजस्वी नाथ परंपरेचे ते 18वे पीठाधीश्वर आहेत. स्वामी जितेंद्रनाथ यांच्या मार्गदर्शन व आशीर्वादाने अनेक सामाजिक कार्य भारतभर सुरू आहेत. महाकुंभ, संतसभा, धर्मजागरण, वनवासी क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, धर्मपीठे अशा निरनिराळ्या क्षेत्रात ते समन्वयक आणि मार्गदर्शक या रूपाने कार्यरत आहेत. श्री देवनाथ वैदिक युनिव्हर्सिटी अँड एन्शंट आर्ट रिसर्च सेंटरचे ते संस्थापक व कुलाचार्य आहेत. मी विनंती करते श्री स्वामीजी आचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज यांना की त्यांनी आता आपलं अध्यक्षीय भाषण करावं. घबराइए नहीं. हरि ओम. स्वादिष्ठया मधिष्ठया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः रक्षोहा विश्वचर्षणीरभियो निमयो हतम् धृणा सदस्तमासदत वरिवो धातमो भौमं हिष्टा वृत्रहन्तमा परशिराघो मघोनाम् अभ्यर्ष महानां देवानां वीतिमन्दसा. हरि ओम. इस गरिमामय व्यासपीठ पर उपस्थित सभी भारत के आधुनिक ऋषिवर, मुझे पता है कि अभी 4 घंटे हो चुके हैं. हंगर और एंगर साथ में चलता है, तो कहीं एंगर ना हो जाए इस कारण संक्षेप में बात करते हुए इस कार्यक्रम का अध्यक्ष इस नाते, जो ये सब दिख रहे भारत के मनीषी, भारत के तारे, वो तारे जमीन पर इस ढंग से इनका गौरवोद्गार कर सकते हैं. मैं इस कार्यक्रम में आए सभी माननीय ऋषिवर के नाम से पुरस्कृत किए हुए भारत के महान, भारत के साधकों को प्रणाम करता हूं. भारत की एक परंपरा रही है. मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, भारत यह विज्ञान का देश है, ज्ञान विज्ञान का देश है. भारत की परंपरा सबसे पुरानी है. सनातन वैदिक हिंदू धर्म जो है, भारत के सभी मान्यताएं, सभ्यताएं और जो धर्म है, हिंदू धर्म छोड़कर, उनकी आयु 4500 वर्षों से ज्यादा है नहीं.
हमारा तो महाभारत का युद्ध ही 5200 साल पूर्व हुआ, उसके पूर्व भगवान राम जी की परंपरा, उसमें 9 लाख वर्ष पीछे हम जाते हैं। तब भी भारद्वाज ऋषि का नाम था, विश्वामित्र ऋषि का नाम था, वशिष्ठ ऋषि का नाम था, अनेक ऋषियों के नाम थे। धरती की शान तू ही ऋषि की संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, ऐसे हम कहते थे। इतने प्राचीन भारत की परंपरा, जो पहले होता है वही नए को देता है। इस कारण जो भी विज्ञान, सभ्यता, मनुष्यता, समाज जीवन, राष्ट्रीयता, ये सब जो मूल्य सिद्धांत दुनिया को दिए गए हैं वो केवल भारत की देन है। इसका हमने जय जयकार करना चाहिए। अब यदि ज्ञान और विज्ञान यह भारत की देन है तो इसकी परंपरा क्या है? आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, विज्ञान को अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? आप कह रहे साइंस। साइंस माने शास्त्र होता है, विज्ञान नहीं होता। शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। ऐसे करो तो ऐसे होगा, वैसे करो तो वैसे होगा, वैसे करो तो वैसे होगा। लेकिन आज यह स्थिति है कि विज्ञान इस शब्द को दुनिया के किसी डिक्शनरी में पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि उनके पल्ले विज्ञान पड़ा ही नहीं। और विज्ञान इस शब्द का उद्गाता कौन है भारत की परंपरा में? चराचर का, विश्व का प्रथम गुरु और चराचर के प्रथम शिष्य, जो गुरु शिष्य परंपरा का अध्वर्यु जिसे माना जाता है, वो भगवान नारायण और ब्रह्मदेव। जब भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो बोलते परमात्मा हूं। अब परमात्मा शब्द दुनिया ने उठाया और हमको सिखाने लगे। परमात्मा क्या है? प्राइम एटम इज अ परमात्मा। परमात्मा शब्द ये प्राइम एटम से ही आया है। जो मूलभूत शक्ति, मूलभूत चिरंतन, मूलभूत अणु जो कार्यरत हुआ, उससे उसका दूसरा स्वरूप हुआ गुरुरेव शिष्यः। तो पहले शिष्य पहले गुरु को पूछते हैं, माने विज्ञान ये शब्द कितना प्राचीन है। वो गुरु को पूछते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यं तरंगंच गृहाण गरितम मया। हे गुरुवर, हे टीचर, तत्कालीन हे डॉक्टरेट प्रोफेसर, हमको वो परम गुह्य ज्ञान दो जो विज्ञान से समन्वित हो, उसमें के रहस्य बताओ। स रहस्यं तरंगंच गृहाण गरितम मया। और फिर से दूसरे श्लोक में पूछते हैं, यावान हम यथा भाव, मैं किसको आह्वान करूं, क्या विजन देखूं, कैसा ऑप्टिमिस्टिक हूं। यद रूप गुण कर्म का, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, रूप गुण और कर्म, उसको लेकर यद रूप गुण कर्म कहा, तथैव तत्व विज्ञानम, उसमें जो प्रिंसिपल्स इन द विज्ञान है, अस्तुते मद अनुग्रहात्, मुझे अनुग्रह पूर्वक आप दो। तब जो परंपरा शुरू हुई वो परंपरा विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतमात्रि, वशिष्ठ, कश्यपा ऋषयः, ये सप्त ऋषि के द्वारा ये दुनिया पर अवतरित हुई। इतनी प्राचीन परंपरा, इसलिए दुनिया भारत छोड़कर दुनिया के मिट्टी में क्या है तो साइंस हो सकता है, लेकिन विज्ञान तो केवल भारत की मिट्टी से ही निर्माण हुआ है। इसलिए विज्ञान के अधिकारी हम हैं। अब मैं गायधानी साहब की, महाकवि जी की ये कविता पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक अपना भाव प्रकट किया है कि कवि जनुकीय परंपरा से ही आता है। बराबर है। जनुकीय परंपरा माने डीएनए वैसे निर्माण होते हैं, उसकी भी एक परंपरा है। और परंपरा, परा माने लौकिक दृष्टिकोण से विविध प्रयोग जो होते हैं उसको परा कहते हैं, अपरा कहते हैं। और परा माने अलौकिक जो होता है, जो डिवाइनली प्राप्त होता है। जो डिवाइनली प्राप्त होता है,
और उसका लौकिक अर्थ में सबके सेवा के लिए उपलब्ध करा देना, यह परंपरा ऋषि मुनियों की भारतवर्ष में रही है, जिसका निर्वहन अनिल काकोडकर जी से लेकर श्रीवर्धन जी से लेकर सभी हमारे साइंटिस्ट लोग आज कर रहे हैं। महर्षि कणाद केवल मुझे आप काकोडकर सर आपने जो डर बताया कि विज्ञान तो विकसित होगा, नए नए इन्वेंशन प्रयोग होंगे, लेकिन संयम, मूल्य, सिद्धांत और संस्कृति की बात उसमें यदि नहीं होगी तो उसका विस्फोट विनाशकारी होगा, जो आज परमाणु बम गिराने की धमकियां परस्पर को देश दे रहे हैं। तो इस कारण महर्षि कणाद तो पहले कहते हैं कि सीखो, पढ़ो, रिसर्च करो, लेकिन ये बात ना भूलो, उस ये बताते समय वो मंत्र कहते हैं, एक अपने को आदेश देते, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्मा, धर्म को ना भूलो। आपको जो रिसर्च करना है, जो आपको साइंस के का ज्ञान फैलाना है, आपको विद्वान सब दुनिया को करना है, तो दो ही चीजों के लिए करो, एक तो व्यक्तिगत जीवन का विकास और उसके द्वारा पूरे जगत का कल्याण। इसके अलावा तीसरी कोई चीज भारतवर्ष से भूली नहीं जाती। तो भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश में जाते हैं तो संदेश देते हैं, तो जग उनका संदेश स्वीकार करता है। मुझे बिल्कुल विश्वास है आज के बाद भारत का हर साइंटिस्ट यदि भारत के बाहर जाएगा तो हर प्रदेश का साइंटिस्ट भारत के साइंटिस्ट के आगे नतमस्तक होकर उसकी बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि कणाद की परंपरा से अभ्युदय आत्मनो मोक्षार्थम, लेकिन जगत हिताय च, जगत के हित के लिए इसका वापर करना, यह भाव केवल भारत ही दे सकता है। और इस भाव के कारण ही हम भारत को विश्व गुरु की उपाधि देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हर देश भारत को विश्व गुरु मानेगा। और इस कारण कितने छोटे छोटे बातों का आज केवल साइंस के विषयों की बात चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन जहां तक सर आपके मेडिकल साइंस की यूटेंसिल्स बनाने की बात है, तो ये जो प्याला है, ये प्याला, इसको काठ नहीं है, काठ जो होता है ना, काठ, और पुराने घरों में बगैर काठ के प्याले दिखते भी नहीं थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि तब मानवता के बारे में विचार करके आयुर्वेद का एक मंत्र है। आयुर्वेद का मंत्र यह बताता है कि यदि ये जो गिलास है, उस गिलास को यदि मुंह को लगाया और उसको दांत लग गया, तो दांत का विष उस पानी के जल के गुणत्व को खराब करता है या उसको स्पॉइल करता है। इस कारण अपसुमे सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा आपो याचामि भेषजम वरुदन तन्वे ममा। अप माने पानी, अपसुमे सोमो माने पवित्र जल, अब्रवी माने ये ओट, दंतर विश्व माने दांत, दंतर विश्वानि भेषजा, उसको लांग कर यदि हम जल पिएंगे और उस समय अच्छा कुछ स्मरण करते करते करेंगे तो आपो याचामि भेषजम, पानी ही औषधि बनेगा और उस पानी में जो डालेंगे उसका परिणाम शरीर को मिलेगा। इतना चिंतन एक प्याला बनाने के लिए भारत करता था। एक प्याला बनाने के लिए इतना बड़ा चिंतन। मुझे पता नहीं, यहां पर सोशल साइंस की बात नहीं हुई, हां आर्ट्स और लिंग्विस्टिक की जरूर हुई। मुझे पता है कि आप सोशल साइंटिस्ट को भी कभी ना कभी पुरस्कार दोगे। कोई दुनिया की डिसिप्लिन ऐसी नहीं रहेगी जिसको यहां पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के भाल को मैं तिलक करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। अब आपको सिंपल, मैं भारत का चिंतन कितना बड़ा था ऋषि मुनियों को। न्याय शास्त्र भारत में मालूम है सबको, आपको तो पता ही होगा। आज न्याय की देवता क्या है? न्याय देवता बोले तो कौन सा चित्र आता है? एक अंधी औरत, उसको पट्टी बांधी हुई, तराजू तोल रही, क्या तोल रही पता नहीं, वो क्या देख रही पता नहीं, उसका कलर भी व्हाइट है, उसका कलर कौन सा पता नहीं। तो उसके कोई मायने, कोई बाहर से आई और इसके पूर्व भारत की न्याय देवता ऐसी नहीं थी। तो भारत की न्याय देवता बताई कैसी है, मैं आपको बताता हूं। न्याय शास्त्र का वर्णन इस भारतवर्ष में जुडिशियल देवता का ऐसा किया है, यदि मैं न्यायाधीश हूं मान लो, तो उसका वर्णन किया गया है अतसो पुष्प संकाशम। यदि कोई जो आरोपी है वो प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद वो न्यायाधीश को देखेगा, न्याय देवता को,
तो अतसो पुष्प संकाशम, वो इतना सौम्य, जैसे हमारे अभी श्रीधरन जी, हमारे डॉक्टर जी, हमारे सब साइंटिस्ट लोग बैठे, कितने सरल और कितने सीधे दिखते हैं, इनमें क्या भरा है। वो जब बात करने लगते हैं, मुझे तो लगता है आज आपने दो आनंद दिए भाल जी। एक तो इनका दर्शन कराया, इनको पुरस्कृत भी किया, लेकिन इनके बोलने के द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो गई जो इंटरनेशनल दर्जा की थी। आपने कॉन्फ्रेंस भी कराई, आपने इनका दर्शन भी कराया, आपने इनके शब्द भी सुनाए और इनको पुरस्कृत करके समाज को दिशा भी दी, प्रेरणा भी दे दी। तो जब वो प्रवेश करता है तो न्याय देवताओं के तरफ देखकर क्या सोचता होगा, अरे इसको क्या आता है, ये क्या न्याय करेगा, इससे बड़ा गुनाह करूंगा तो इसको निपट लूंगा मैं, जब आर्गुमेंट करूंगा ना, मेरा वकील करेगा ना। अतसो पुष्प संकाशन, इतना माइल्ड, अलसी के फूल जैसा सौम्य। न्यायो, लेकिन न्याय देवता कैसी होनी चाहिए, सौम्य होना चाहिए दिखने के लिए एट द फर्स्ट साइट। और कैसी होनी चाहिए, न्यायो, न्याय का मूर्तिमंत स्वरूप। ज्ञेयो माने उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। विपश्चिता माने बुद्धि की पराकोटि उसमें होनी चाहिए। अतसो पुष्प संकाशम, न्यायो ज्ञेयो विपश्चिता सिंहास्यो, जब वो पूरे केस का रिजल्ट अब ऑर्डर करने जा रहा है तो आरोपी के मन में सिंह की दहाड़ लगी ऐसा लगना चाहिए। सिंहास्य, जब वो एक एक वाक्य बोलेगा तो शेर की दहाड़ के जैसा होगा। दक्षिणे सूत्रम, एक भी बात में गैर कानूनी नहीं कहूंगा, दक्षता रखूंगा, दक्षिण बाजू की रखूंगा। सिंहास्य दक्षिणे सूत्रम, ध्वज वाम करे ददन, यदि घूस देने की चेष्टा की, न्याय को पटाने की चेष्टा की तो वामाचार करने नहीं दूंगा, क्योंकि वाम हस्त में मैंने धर्म दंड धारण किया हुआ है। इतनी बड़ी ताकतवर न्यायाधीश की भूमिका ब्रिटिश इस भारत में आए तो अंधी औरत बिठा के गए और हमारे न्याय के ध्यान को उठाकर चला गए। अब कौन समझाए जुडिशियरी में, कौन समझाए इनको। ऐसे कई चीजें हैं। मैक्स मुल्लर आए जो मरने के बाद केसरी में तिलक जी ने मोक्ष मुल्लर करके लिखा था। मुझे तो तिलक जी का भी आश्चर्य लगता है, कभी कभी अच्छे अच्छे लोग भी चिंतन थोड़ा सा अपने ओर से कर लेते तो चूक जाते हैं, आदमी है। वो कहते हैं कि भारत के वेद केवल 5-6 हजार साल ईसा पूर्व ख्रिस्त पूर्व के हैं। कैसे हो सकता है, यदि विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि 9 लाख वर्ष पूर्व रघुवंश में वेदोच्चारण करते हुए सर्वोच्च शिखर पर इस ईसा पूर्व 6-7 हजार साल पूर्व कैसी हो सकती है, उनको यह प्रश्न पूछा था। तो बोले मैं एडवोकेट हूं। क्या बोले तिलक जी, मैं एडवोकेट हूं, मेरी बात कोई खोड़ सके तो खोड़ सकता है, अपनी बात एस्टेब्लिश करना है तो मैदान में उतरो। तो मुझे लगता है मैदान में उतरने के लिए हमारे भाल साहब अभी सज्ज हो गए हैं कि भारत की प्राचीनता का गौरव, भारत के प्राचीन तपस्या परंपरा का वैभव वो दिखाने के लिए यहां पर आए हैं। और इस कारण बहुत ज्यादा बोलने का ये समय नहीं है, लेकिन फिर भी बात बताने के लिए एग्रीकल्चर भारत में विकसित था। अब जो पुस्तकों में एग्रीकल्चर की हिस्ट्री बताते हैं तो ईसा पूर्व ख्रिस्त पूर्व केवल 2000 साल पूर्व एग्रीकल्चर था, उसके पहले नग्न लोग रहते थे। इवोल्यूशन थियरी को तो वैसे भी नकारा गया है। पहले के यदि बंदर, उससे इवोल्यूशन यदि आपका हमारा हुआ है तो आज के बंदर है कौन, यह प्रश्न आता है। तो हम धरती की शान, तू है ऋषि की संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हम उन ऋषि मुनियों की और ब्रह्मा की और नारायण की संतान हो सकते हैं, उनकी संतान कैसे होंगे। तो थोड़ी सोचने की बात है। तो एग्रीकल्चर तो अथर्व कृष्ण यजुर्वेद में तो बोलते हैं यावाश्चमे, माशाश्चमे, तिलाश्चमे, गोधुमाश्चमे, खलवाश्चमे। गहू भी आप हो, चना भी आप हो, मसूर भी आप हो, गोधू भी आप हो, सभी दालों का जिक्र किया है। पर्वताश्चमे, सिकताश्चमे माने उसके खनिज भी पर्वत के अंदर के आप हो, माने खनिज उनको मालूम थे। प्याला बनाना उनको आता था, प्याला तो मिट्टी का नहीं बनता तो मेटल भी बनाना आता था। नाना प्रकार के संशोधन हमारे भारतवर्ष में पहले से किए हुए हैं, लेकिन बात वही है जो पेन्ना सर ने की। मालूम सब है, मालूम करना भी चाहते हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन। सिलेबस की शिक्षा, और आज होशियार कौन कहलाते हैं,
यहां तो सर्च नहीं रहा, रिसर्च ठीक है, जो पहले से सर्च हुआ उसको एडवांस में लेकर चले जाओ, लेकिन सर्च की बात अभी भारत में नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और पढ़ने के संदर्भ में लोगों का भ्रम केवल निधि जमाना, पैसा खड़ा करना, समृद्ध होना, आर्थिक संपन्नता से यही हो चुका है। त्यागे नहीं वो मानुषम अमृतत्वम, ये तो घोष था हमारे साइंटिस्ट लोगों का कि आज भी कणाद का नाम ले रहे, आज भी हम सुश्रुत का नाम ले रहे, आज भी हम आर्यभट्ट का नाम ले रहे। क्यों ले रहे? उनको तो रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी। जहां तक राजाश्रय की बात है, राजाश्रय के साथ एक भी ऋषि मुनि रहा नहीं। ऋषि मुनि तो दरबार में केवल संगोष्ठी करने आते थे, फिर सीमा लांघ कर अपने आश्रम में, कुटियों में चले जाते थे। मुझे लगता है 50-50 विन-विन सिचुएशन बात होनी चाहिए। राजाश्रय, राजा अपने विचार से राज्य के कल्याण के लिए करे, लेकिन मेरे कल्याण का उपयोग और उपभोग मैं राजाश्रय को लेकर जीवन का नहीं लूंगा, यह धारणा साइंटिस्ट लोगों की भी होनी चाहिए, जो ऋषि मुनियों की थी। और मुझे पता है, जब मैं हमारे विजय भटकर जी का जीवन देखता हूं, सामान्य भेष में, उनको प्यास की, उनको भूख की, उनको सोने की कोई लगन नहीं है। जीवन का क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं, उनके घर का क्या रहे वो भी उनको पता नहीं। रात दिन राष्ट्र की लगन, संशोधन की लगन, रात दिन पुनरुत्थान की लगन, रात दिन अपने भारत के अभ्युदय का ध्यास लेकर ये सभी साइंटिस्ट लोग चल रहे हैं। सामान्य भेष में ये सच्चे ऋषि है और मुनि भी है। मैं इनका गौरव अध्यक्ष इस नाते आज करता हूं। ऋषि क्यों और मुनि क्यों? जब वो कार्यरत होते हैं, ऋष्यते, जब वो इधर उधर जाते हैं और काम को लगते हैं, तब वो ऋषि होते हैं, तब वो बोलते भी है और डांटते भी है, गवर्नमेंट से करवाते भी है। भले ही कितने भी स्वार्थी लोग गवर्नमेंट में और कहीं होंगे तो उनको ढाट डपटशा करके, उनसे रुसवा करके वो बात करवा भी देते हैं, लेकिन वो कार्यरत होने के पूर्व उनकी जो मौन स्थिति और चिंतन स्थिति होती है, पठन मनन और श्रवण करते करते उनकी जो आत्मस्थिति से वो मैचिंग अपना करते हैं, उस समय वो मुनि भी होते हैं। इस कारण ये ऋषि भी है और ये मुनि भी है। तो ऐसी परंपरा इस भारतवर्ष की, हरिश्यन्ते करिष्यति, शम माने कल्याण, शंकर का नाम शंकर इस कारण है, शंकरोति इति शंकरा, जो कल्याण करते हैं वही शंकर है। और इस कारण देव देश धर्म स्थिति का और मनुष्यता का कल्याण करने के लिए अपने पूरे जीवन को देने वाले यही शंकर के अवतार है। शंकर ज्ञान की देवता है, तपस्या की देवता है और शंकर विद्वत्ता की भी देवता है। और इस कारण बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं। जब से हमने एक छोटा सा काम शुरू किया है, जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च, आज मौका है तो 2 मिनट में बता ही देता हूं। हम भारतवर्ष में सर घूमते हैं और घूमते समय हमको एक ख्याल में आता है कि वैदिक बहुत मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? यदि मैं बोलूं स्वादिष्ठया मरिष्ठया पवसो सोमो धारया या इति वै सप्तो नेन्द्रोलभा आत्मानंतुष्टा, इस पंक्ति का अर्थ क्या है यदि पूछा जाए तो बोलते पता नहीं है। 8-8, 10-10 वर्ष वेदाध्ययन करने के बाद में भी करते क्या है? गांव में पूजा पाठ, शांति, लगन, मुंज यही लगाते हैं। लेकिन उसमें जो ज्ञान परंपरा है, आप श्री ने तो इतना बड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा IKS का नाम और IKS की प्रणाली भारतवर्ष में आपने शुरू की, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और इनके परिश्रम से भारत ऐसा बनेगा, इस भारत में सहस्त्रों विवेकानंद पैदा हो गए, सहस्त्र ऋषि पैदा हो गए, जिसकी नींव आज श्रीधरन सर ने रखी है। तो यह बात है। तो अजर अमर यह ज्ञान होता है, अजर अमर यह ज्ञान का प्रेरणा स्रोत होता है, वो कभी मिटता नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत होता है। E = mc² हम पढ़ते ही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो केवल एक फॉर्म से अलग फॉर्म में आते हैं। कणाद एनर्जी थे, सुश्रुत एनर्जी थे, शाल्व एनर्जी थे, भरद्वाज एनर्जी थे, शरीर से गए, लेकिन उन्होंने फॉर्म चेंज किया और वो चेंज किया हुआ उन ऋषि का एनर्जेटिक फॉर्म ये साइंटिफिक स्वरूप में हमारे इर्द गिर्द बैठा है, यही है, दर्शन के रूप में आया है। और इस कारण इस लिनिएज को प्रणाम करते हुए, इनकी परंपरा को प्रणाम करते हुए, आपके पेट में लगे हुए भूख का सम्मान करते हुए मेरे वाणी को यहां पर विराम देता हूं। और फिर से विदर्भ, नागपुर देश से प्रेम करने वाले यह वैज्ञानिक,
भारत के समाज के सामने आने का जो मौका आज भाल साहब ने दिया, इसमें विश्व मांगल्य सभा भी शामिल है, इसमें मैत्री परिवार भी शामिल है। मिलकर ऐसे ही परंपरा चलाएंगे, इस सत्कार्य को सपोर्ट करेंगे और भारत के वैज्ञानिक, चिंतक, भारत के श्रेष्ठ संत और वैदिक और सामान्य समाज इनकी संगोष्ठी करा के परस्पर में समन्वय करके भारत का निर्माण जो होगा उसी से भारत विश्वगुरु होगा। इस मंगल कामना सहित वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत ही औचित्यपूर्ण और मार्मिक विचार स्वामी जी से हमने सुने। भाषण उनका खत्म ही न हो ऐसा लग रहा था। As we come to the end of our time together, before we disperse, I wish to say it has truly been an honor to be a part of such an accomplished gathering. Let us take with us the memories we have made and the joy we have felt. I now call upon Mr. Harsh Deshmukh, Chief Coordinator of Hindu Research Foundation, to propose vote of thanks. थैंक यू अनीता तिड़वे मैम। जैसे स्वामी जी ने कहा हंगर और एंगर, मैं एंगर का पार्ट नहीं बनना चाहता, तो 2 मिनट में क्विकली खत्म करूंगा। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड बट दिस इज कम्प्लीटली कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू थैंक यू आवर गेस्ट, चीफ गेस्ट हंसराज अहीर जी, प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी, Swami Jitendranath Maharaj ji for accepting our invitation and gracing us with your presence. We are really grateful to you, and we would make sure that whatever Swami ji said, that next year we would be going international. We are making sure that few of the scientists next year would be honoring would be from international side. I would like to again thank our real heroes of Bharat, or we can say the Vartaman Kaal ke Maharishi जो हमारे सामने बैठे हैं। सर, योर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। योर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस इज फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट सर, जहाँ पे इतने एमिनेंट पर्सनैलिटीज एंड इतने ग्रेट पर्सनैलिटीज एक फ्रेम में दिखने मिलते हैं। आई एम प्रोफाउंडली ऑनर्ड एंड डीपली प्रिविलेज्ड। I cannot tell you how much it feels, the aura that I can feel, that I am feeling right now, sharing this stage with you all. I can see that the whole audience is feeling the same way. We are really grateful to you. When we started this concept, this was altogether a new concept. We were not sure whether we will be successful or not. And we are really grateful to you for accepting this award. We would be always in depth. And we really thankful. We immensely thank you for accepting the award. And then I would like to thank the associated organization, Vishwa Mangalya Sabha, Maitri Parivar Sanstha, Engineering Forum, Agresar Foundation, Agrovate Agro Engineering Mitra Parivar, Matru Shakti, Kalyan Kendra, Vidarbha Nagpur, Agricos Welfare Society, Indian Medical Society. You all have been a pillar of strength for us, and thank you for supporting throughout this journey. And also I would like to extend the gratitude to all the donors who have not contributed only financially but also emotionally in our mission to make sure that we achieve our vision and we are much closer to our goal because of all your contribution. Thank you so much for your all support. I would like to mention some of the names like Eagle Infra India Limited, DPJ and Vijay Engineering, Shri Vivek Ajinath Raikar, Arjuna Celebration, Inverse AI, and Hellbent for helping us with all the donation and making this event successful. Then I would like to extend our gratitude to Persistent System, Dr. Anand Deshpande and CEO Samir Bendre, who have given this magnificent hall and helping us with this event and award ceremony every year. Last year also we had the same ceremony in this hall itself, and this year also we are celebrating here only. So a great thanks to all the Persistent System team, IT team and the admin team. And of course, the person here who have been talking since last 4 hours or 3 hours, our anchor, I would like to have a big round of applause for Anita Tidve madam. She always comes from Goa. She always comes from Goa to make this event successful. And she has a tremendous energy, and she makes sure that atmosphere is vibrant and audience is engaged. And it is not an easy job. Yeah. Thank you so much, Anita Tidve, for
Thank you, Anita Dhume ma'am, for your contribution with the vision that Hindu Research Foundation has begun with. Then I would like to thank, this is something has come up from the volunteers, a special thank you note to Dr. T.S. Bhal, who has initiated this ceremony. And they are thankful to him because this is kind of a forum that they would have never imagined that they would get to spend time with such great personalities, and this is happening all together because of Dr. T.S. Bhal. And I just want to promise him that we all are aligned with his vision and we will make wonderful things in upcoming time. Then, of course, last but not the least, the volunteers who have been working tirelessly for this event. You are the key ingredient of this ceremony. Without you, this event is not possible. Thank you so much to all the volunteers.